Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
संकीर्तन की जय, जय रामदेव की जय जयकार हो। प्रभु जी, हरी हरी बोल। थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल कीर्तन। मेरा दोस्त एकदम साइलेंट में आज। हाँ, मेरा दोस्त एकदम साइलेंट मूड में, क्या हो गया? वॉइस क्रैक हो रहा है आपका। हाँ, तो आप सभी लोगों के लिए श्याम देश की तरफ से हरे कृष्णा मंत्र आपकी स्पष्ट के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। शरण प्रभु, आर यू ऑल्सो
coordinating today. Yes, Prabhu, Hare Krishna. You are coordinating or Ratish Prabhu? Yeah, Ritesh Prabhu is also there. Okay. Because he said He he will may be attending some meeting at 9, it seems. We'll pray for his good health also. Yeah. He has got some guests at home. COVID, Baba. So we'll pray for him before we start the program. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Has Damodar Pandit Prabhu joined? No, Prabhu. No. There's some disturbance of the sound coming. I don't know why it's coming there. No, it's okay, Prabhu. Yeah, we will be coming very soon now. He's just joining. Hemanga Prabhuji, Dandot Pranam. हरे कृष्ण दंड प्रणाम प्रभु आपके चरणों में दंड प्रणाम स्वीकार करिए। आपके मुंह से हिंदी भागवत श्लोक ये सब रेडी है बाहर निकलने के लिए। हिंदी बस आप लोगों की कृपा से थोड़ा बहुत कर रहे हैं। आप लोग कृपा करते रहिए तो हम जल्दी से कृष्ण प्रेम प्राप्त करके इसी जन्म में जाए। गुरु और कृष्ण के प्रति सब भक्तों के प्रति प्रेम जागृत हो जाए, जल्दी से जाए गोलोक में। हरी हरे कृष्ण। मैं सिर्फ सुना, मैं कुछ बोला नहीं। क्या बोला? आपने प्रसाद का बोला, मैं ठीक लगा, बोलने वाला था हाँ तथास्तु, लेकिन आप आगे कुछ बोल दिया तो फिर मैं चुप बैठ गया। क्या प्रसाद का क्या, मैं समझा नहीं। आपने वाला प्रसाद विसाद खाओ, अच्छा से रहो, मैं बोला ठीक है, लेकिन आगे वाला गोलोक का वृंदावन का बोला तो मैं बोला ये मेरी बस की बात नहीं है, इसलिए आप बोलना नहीं चाहिए। नहीं, वो तो अल्टीमेट उद्देश्य तो वही है जीवन का, और क्या। तो आप नाम रुचि। Ratish Prabhu just Damodar Pandit Prabhu has joined. Jai. हरि बोल। Please make Prabhuji co-host and so that he can invite. Prabhuji, please unmute yourself. Damodar Pandit Prabhuji, you are right muted, I think. Unmuted, yes, I'm unmuted, yes. Yeah, welcome to Shamadesh. After a very long time, nice to see your digital presence here, and we're very happy that. Thank you. It's my good fortune to be with all of you. Wonderful. Yeah. You are looking very efficient also. No, I don't know about that. Thank you, Prabhuji. Give me a minute to introduce your grace, and then I can start the class. Yes, Guru. Thank you. Yeah. So we are very fortunate to have His Grace Damodar Pandita Prabhuji with us, senior disciple in ISKCON movement. Prabhuji actually is a disciple of His Holiness Radhanath Swami Maharaj, and he joined at a very young age when he was studying in Vienna in 1974. He had gone there for further studies from Mumbai, and in 1978 he came in contact with the devotees there, and he took up to Krishna consciousness and came back to Bombay in 81, where he was in Jew land, and he was also the director for public and cultural affairs for Asia. And I had the good fortune to have his mercy for many years.
Prabhuji has also traveled to the Far East for fund collections into Singapore, Malaysia, and Indonesia and all, where he also assisted in the food distribution programs. And in 1988, he joined as a team founder with the doctors at the Bhaktivedanta Hospital, Mira Road. As we all know, it's one of the very important hospitals of ISKCON. And he's a head counselor and helped establish the department. So he has been rehabilitating many families by advising them on various human relationships and exercise, diet, health, etc. He also, I remember, started a school in Vada area for the tribals, and there are many other sevas that he's been doing in cow protection and I can say technical skills development, etc. He also takes seminars for big corporates like Tata, Reliance, Aditya Birla and all. So we are very fortunate to have him today. So welcoming Prabhuji and praying for his good health. Big Hare Krishna mantra from all of us. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. हेमंत प्रभुजी आप अनुवाद कर सकते हैं थोड़ा सा हिंदी में भी? हाँ ठीक है। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में पूजनीय दामोदर पंडित प्रभु पधारे हैं, और ये देखा जाए तो बहुत ही वरिष्ठ भक्त है हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना आंदोलन के। इन्होंने 1974 से एक्चुअली इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने जब मुंबई से जब गए थे 1974 में यहाँ से वियना, वहाँ पे कुछ भक्तों से मुलाकात हुई। फिर 1978 में इसको बहुत ज्यादा इन्होंने गंभीरता से ले लिया इन्होंने, और उसके बाद में जब 1981 में जब यहाँ पे आए तो उन्होंने जुहू, जो हरे कृष्ण लैंड जुहू है, वहाँ पे थे, और वहाँ पे काफी अच्छी सक्रिय रहे, काफी सेवा में वो। और वहाँ पे जो एशिया का जो अंतर्राष्ट्रीय जो है सेवा संघ था, उसके वो भी थे, डायरेक्टर थे उसके। और इसके बाद में उन्होंने देखा जाए तो जो भक्तिवेदांत हॉस्पिटल है उसका नींव भी इन्होंने डाला है, भक्तिवेदांत हॉस्पिटल। उसके बाद उन्होंने जो वाड़ा में जो गुरुकुल जो विद्यालय वगैरह उनका भी स्थापना किया उन्होंने। और इसके अलावा जो बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां रिलायंस में, टाटा में है, उसमें भी ये सेमिनार देते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो बहुत सारे जो भक्त हैं उनके काउंसलर भी हैं ये, उनको अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, उनको भक्ति में कैसे आगे बढ़ना, कैसा यहाँ घर गृहस्थी के लोगों को उनको मार्गदर्शन देते हैं। तो ये हमारे बीच आज पधारे, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो हरे कृष्ण। Over to you, Prabhuji. I will sing Jai Radha Madhava now. Yeah, we will not repeat after you. You please continue continuously. Okay. Thank you, Prabhuji. Jai Radha Punjabi Hari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jai Radha Madhava Punjabi Hari Yashodanandana Braja Janarandana Yashodanandana Braja Janarandana Yashodanandana Braja Janarandana Yashodanandana Braja Janarandana Yamuna Tira Radha Madhava Punjabi Hari Jaya Radha Madhava Punjabi Hari Jaya
परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस शिला भाई चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। स्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामचर्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से गो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। द्वारकानाथ जगन्नाथपुरी धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्याम वेद भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्याम देश यात्रा की जय। गौर भक्त वृंद की जय। गौरा प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Guru and to Sri Gauranga. All glories to Sri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo भगवते वासुदेवाय। Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayo Mutiraye Nashtapraesho Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistaki Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavnibhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatade Shikarane Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandha Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Sute Devi Pranamami Hari Priye Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So there is no need for you to repeat the verse. I will just read the verse and then I will read the translation and then I will read the purport. Is that okay? Yeah, that's fine. Okay. Grivayam kasya tapo lokas kanadvaya murdavi satya lokastu brahma loka sanatana Grivayam janalokya tapo lokas tanad tapo lokstanad dvayat murdavir satya lokastu brahma loka sanatanaha. So the translation is like this. From the forefront of the chest up to the neck of the universal form of the Lord are situated the planetary systems named Janaloka and Tapaloka, whereas Satyaloka, the topmost planetary system, is situated on the head of the form. The spiritual planets, however, are eternal. Purport by His Divine Grace, Srila Abhay Charana Ravinda Bhakti Vedanta Swami, Srila Prabhupada.
So I will just continue reading, Prabhu, and the Prabhuji will be translating automatically in Hindi, right? Yes, yes. Yeah, you So will have to together. Should I Together pause? in Hindi. Yes, No, Prabhu. means, all together when you finish English, then screen will go in Hindi. Then all together Hindi I will do. Okay. I will read the whole thing. Yes. Okay, Prabhu. Okay. Yes. Many times in these pages we have discussed the spiritual planet situated beyond the material sky, and the description is corroborated in this verse. The word Sanatana is significant. This very idea of eternity is expressed in the Bhagavad Gita 8.20, where it is said that beyond the material creation is the spiritual sky, where everything is eternal. Sometimes Satyaloka, the planet in which Brahma resides, is also called Brahmaloka. But the Brahmaloka mentioned here is not the same as the Satyaloka planetary system. This Brahmaloka is eternal, whereas the Satyaloka planetary system is not eternal. And to distinguish between the two, the adjective Sanatana has been used in this case. According to Srila Jiva Goswami, this Brahmaloka is the loka or abode of Brahman or the Supreme Lord. In the spiritual sky, all the planets are as good as Lord. The Lord is all spirit, and his name, fame, glories, qualities, etc., are all non-different from him because he is absolute. As such, the planets in the kingdom of God are also non-different from him. In those planets, there is no difference between the body and the soul, nor is there any influence of time as we experience it in the material world. And in addition to there being no influence of time, the planets in Brahmaloka, due to being spiritual, are never annihilated. All variegatedness in the spiritual planets is also one with the Lord, and therefore the Vedic aphorism Aham Ekadvitiyam is fully realized in that Sanatan atmosphere of spiritual variegatedness. Put that chanting box off. This material world is only a shadow phantasmagoria of the spiritual kingdom of the Lord. And because it is a shadow, it is never eternal. The variegatedness in the material world of duality, spirit and matter, cannot be compared to that of the spiritual world. Because of a poor fund of knowledge, less intelligent persons sometimes mistake the conditions of the shadow world to be equivalent to those of the spiritual world. And thus, they mistake the Lord and his pastimes in the material world to be one with the conditioned souls and their activity. The Lord condemns such less intelligent persons in the Bhagavad Gita, chapter 9, verse 11. Avajananti mamudha manusham tanum asritam param bhavam majanto mama bhuta maheshwaram. Whenever the Lord incarnates, he does so in his full internal potential, Atma Maya, and less intelligent persons mistake him to be one of the material creations. Srila Sridhar Swami, therefore, rightly commenting on this verse, says that the Brahma Loka mentioned here is Vaikuntha, the kingdom of God, which is Sanatan or eternal, and is therefore not exactly like the material creations described above. The Virat, universal form of the Lord, is an imagination for the material world. It has nothing to do with the spiritual world or the kingdom of God. हरे कृष्णा। आज का स्कंद 2 है और स्कंद 2 में अध्याय 5 है और श्लोक संख्या 39। उसका हम अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान के विराट रूप के वक्षस्थल से
गाधन तक के प्रदेश में जनलोक तथा तपोलोक स्थित है, जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक इस विराट रूप के सिर पर स्थित है, किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का जय, श्रील प्रभुपाद की जय। इसी ग्रंथ में हम अनेक बार बता चुके हैं कि आध्यात्मिक लोक भौतिक आकाश से परे स्थित है, और इस श्लोक से उस वर्णन की पुष्टि होती है। यहाँ पर सनातन शब्द महत्वपूर्ण है। भगवद गीता 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में नित्यता का यही भाव व्यक्त हुआ है, जहां यह कहा गया है कि इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक आकाश है, जहां प्रत्येक वस्तु शाश्वत है। कभी कभी सत्यलोक, जहां ब्रह्मा निवास करते हैं, ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, किंतु यहाँ जिस ब्रह्मालोक का उल्लेख है वह सत्यलोक नहीं है। यह ब्रह्मालोक शाश्वत है, जबकि सत्यलोक शाश्वत नहीं होता। इन दोनों में अंतर बताने के लिए सनातन विशेषण का प्रयोग किया गया है। शील जी गोस्वामी के अनुसार ब्रह्मलोक ब्रह्मा या परमेश्वर का लोक या आवास है। आध्यात्मिक आकाश में सारे लोग साक्षात भगवान जैसे हैं। भगवान परमात्मा है और उनका नाम, गुण, यश, गुण, लीला इत्यादि उनसे अभिन्न है, क्योंकि वे परम पूर्ण है। इससे भगवान के धाम के लोग भी उनसे अभिन्न है। उन लोगों में न तो शरीर तथा न आत्मा में कोई अंतर होता है, न वहां इस जगत में अनुभव किए जाने वाले काल का प्रभाव ही है। वहां पर काल का प्रभाव न होने के अतिरिक्त ब्रह्मलोक के सारे लोग आध्यात्मिक होने के कारण कभी विनष्ट नहीं होते। आध्यात्मिक लोगों की सारी विविधता भगवान से तदाकार है। अतः इस वैदिक सूक्ति एकम एवा द्वितीयम की पूरी पूरी अनुभूति उस विविधतामय आकाश में हो जाती है। यह भौतिक जगत भगवान के आध्यात्मिक जगत की मृज मरीचिका मात्र है। छाया होने के कारण यह कभी शाश्वत नहीं होता। इससे द्वैतपूर्ण आत्मा तथा पदार्थ भौतिक जगत विविधता की तुलना आध्यात्मिक जगत से नहीं की जा सकती। कभी कभी अल्पज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के अभाव में छाया रूपी संसार को आध्यात्मिक जगत के तुल्य मान बैठते हैं, और इस तरह से वे इस संसार में भगवान तथा उनकी लीलाओं को और बद्धचित तथा उनके कार्यकलापों को एक समान मान लेते हैं। भगवान ने भगवद गीता 9वें अध्याय के 11 श्लोक में ऐसे अल्पज्ञों की भर्त्सना की है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुम आश्रितम परम भावम अवजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो वे अपनी पूर्ण अंतरंगा शक्ति आत्म माया से ऐसा करते हैं, किंतु अल्पज्ञ उन्हें भौतिक सृष्टि में एक समझ बैठते हैं। अतः इस श्लोक की टीका करते हुए श्रीधर स्वामी ठीक ही कहते हैं कि यहाँ पर उल्लेखित ब्रह्मलोक वैकुंठ है जो सनातन है। अतएव वह पूर्ण वर्णित भौतिक सृष्टियों जैसा नहीं है। भगवान का विराट स्वरूप भौतिक जगत की कल्पना है। इसका आध्यात्मिक जगत भगवान के धाम से कोई सरोकार नहीं है। हरे कृष्णा। जय हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ग्रीवायां जनलोकस्य तपोलोकः स्तनद्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोक सनातनः। So this is a very important chapter. तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ये अध्याय है। Actually, I forgot. Before I begin my lecture, I would like to express my gratitude to Radha Bhav Gaur Prabhu. तो मैं एक्चुअली ये प्रवचन आरंभ करने के पहले मैं राधा भाव प्रभु का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। And to the devotee who is translating so kindly. और उन भक्तों का जो अनुवाद कर रहे हैं। And to all of you who have taken your valuable time
to listen to an unqualified person like me. और उन लोगों का जो है मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो आज यहाँ पे उपस्थित है। So I beg for your mercy, your kindness, your blessings, everything, your protection, so I can say something for my purification. Please forgive me if I speak beyond my capacity. I'm just like a small child. तो And मैं if I've said anything that is of inspiration to you, then you give all credit to Guru, Shri Guru and Shri Gauranga. तो क्योंकि मैं तो उस प्रभु जी अपनी नम्रता दिखा रहे हैं कि मैं उस योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ गलती त्रुटि हो तो मुझे माफ कर देना। अगर जो अच्छा हुआ तो गुरु की कृपा से हुआ है, और कुछ अगर त्रुटि हुई है तो मेरे अयोग्यता के कारण हुई है। Because I have noticed that every time I have to give a lecture, it is one of the most fearful moments of my life. तो मैंने ये हमेशा अनुभव किया है मेरे जीवन में कि जब भी मैं प्रवचन करता हूँ तो मुझे बहुत भय लगता है। ये भय वाला अनुभव हमारे हमेशा मेरे को याद आता है कि हमेशा भयभीत रहता हूँ मैं। Because there are so many qualified Vaishnavas and more highly realized who are listening to, you know, a person like me who is not really spiritually advanced. So therefore, you know, I have to think twice, 3, 4 times, you know, before I say something. So therefore, if they are kind to me, then maybe something sensible will come out of my mouth. तो क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा आध्यात्मिक रूप से अभी उन्नत नहीं हूँ, और लेकिन बाकी जितने वैष्णव जो यहाँ पे उपस्थित है, जो श्रवण कर रहे हैं कथा का, वो मुझसे कई गुना ज़्यादा उन्नत है, भक्ति बहुत आगे बढ़े हुए हैं। तो कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा नहीं कि मुझे मुँह से कुछ फिसल के निकल जाए और उसका कुछ वो हो जाए, तो इसलिए मैं उसके लिए क्षमा पर प्रार्थी रहूँगा। So therefore, Srila Shukadev Goswami was praising Parikshit Maharaj. He was saying, you are asking such wonderful questions for the benefit of humanity. So therefore, I am feeling inspired to speak to you. You're feeling very grateful to Parikshit Maharaj. तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे है ना परीक्षित महाराज को बोलते हैं कि आप है ना इतने बढ़िया प्रश्न, इतने उत्तम कोटि के प्रश्न हैं आपने पूछे हैं, तो ये तो पूरे संसार को इससे है ना लाभ पहुंचेगा, पूरे विश्व को, पूरे जितने भी आने वाली पीढ़ी सबको इसका लाभ होगा। और मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ कि आपने इससे बहुत अच्छे जो योग्य प्रश्न आपने किए हुए हैं, और मैं इसलिए बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ इतने अच्छा प्रश्न पूछने के लिए। And similarly, Sutta Goswami was very, very inspired by the sages at Naimesharanya headed by Shaunak Rishi, especially in the first canto when they asked him the 6 different questions, which are so relevant actually for the living entities, especially with the approaching of Kali Yuga. तो इसलिए जो सुत गोस्वामी से भी जैसे जो नैमिषारण्य के ऋषि जब उनके प्रश्न पूछ रहे, विशेषकर जब ये कलयुग आ रहा है, तो उससे जो 6 प्रश्न उन्होंने जो उनसे पूछे गए थे बहुत ज्यादा कलयुग से संबंधित है पूर्ण रूप से, और कलयुग में उसका क्या लाभ होगा जो जन सामान्य के उसके ऊपर ही है पूरे श्लोक, उनके प्रश्न जो है। And you can see that how passionate these sages were. All these sages, there were 88,000 sages in Naimisharanya, which is considered to be like the hub of the universe. And how compassionate they are, because right now you can see the crisis there is due to this COVID variants, you know, literally turning the world upside down. They had definitely foreseen all this. तो यहाँ पे देखा जाए तो जब वहाँ पे 88,000 जो ऋषि हैं वो एकत्र होते नैमिषारण्य में, और उस टाइम में क्योंकि जैसे जो हालात थे बहुत आपातकालीन हालत थी, वैसे आप देख सकते हैं कि आज भी वही हालात में है कि कोविड का जो ये पूरा चक्र जो हमारा महामारी का चल रहा है, और वो हमारे लिए भी आपातकालीन स्थिति है। तो इसलिए आज जो ये श्रीमद् भागवतम हमारे ऊपर पूर्ण रूप से उपयुक्त है सभी के लिए इसका श्रवण करना, उसका लाभ उठाने के लिए। Yes, and Srila Prabhupada, the predictions he has made in his conversations, in his letters, and especially books, Srila Prabhupada has made so many, and they are all coming true. तो इसलिए जो श्रील प्रभुपाद ने अपने कई पत्रों में अपने जो उन्होंने पत्र लिखे हैं, अपने जो भी उन्होंने अपनी डायरी में या जो भी भागवतम के जितने भी उन्होंने तात्पर्य वगैरह लिखे हैं, तो उसमें अभी मालूम पड़ता है कि उन्होंने जो भी कुछ लिखा हुआ है पूर्ण रूप से सत्य है वो सब। See the condition of the world, my God, you know,
people are dying not because of COVID. They're killing themselves because of fear, because of stress, because of attachment to illusion. यहाँ पे जो लोगों की अभी क्या है, पूरे पूरे विश्व क्या आप देख सकते हैं क्या है उसके हालात है अभी, कैसा उनका अवस्था में अभी लोग है ना, कोविड के कारण नहीं मर रहे हैं उतने लोग जितना कि उनके जो भय के कारण, और भय उनको मार रहा है। उनको देखा जाए तो भय और के कारण जो उनको भय और जो दुख है, या उनका जो बहुत सारी मानसिक जो तनाव है, जो मानसिक तनाव, उससे लोग है ना मर रहे हैं, उससे लोग बहुत ज्यादा कष्टमय जीवन में आ गए हैं। The immunity levels are going so low that even after boosters they are getting actually COVID. तो उनका जो प्रतिरोधक क्षमता इसलिए इतनी कम हो गई है अभी कि इवन उनको जो बूस्टर लगाने का जो डोज है, जो कोविड का तीसरा मतलब जो है, उसको लगाने के बाद भी फिर भी उनको है ना कोविड हो जाता है। इतना मतलब उनका जो प्रतिरोधक क्षमता इतनी कम हो चुकी है। And it's a well planned move to exploit and get rid of unwanted population. You see somehow this unwanted population, it's mentioned in the Nrsimha Puran, is eliminated by floods, by wars, by pestilence, by famine and all. But now these modern leaders have invented many ingenious ways to get rid of unwanted population, because the economy of the world is in such a horrible condition. तो देखा जाए तो ये जो आप देखेंगे जितने भी जो विश्व में जब जनसंख्या बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा ही जो बढ़ जाती है, जिसकी आवश्यकता नहीं, आवश्यकता से ज्यादा ही हो जाती है, तो उनका कैसे उनको कम करने का है, तो ये पूरा भगवान की जो है ये पूरा प्लानिंग है भगवान की, और भगवान का पूरी योजना है। ये भगवान की योजना यही है कि भाई कैसे भी करके, जैसे अभी बहुत सारे जो भूकंप आ जाते हैं, कभी महामारी अभी जैसे फैली हुई है, बहुत बाढ़ आ जाती है, तो कुछ न कुछ जो जितने भी जो आध्यात्मिक वातावरण में कुछ ऐसा अंतर होने से तो कई लोगों की मृत्यु होती है। तो ये पूरा भगवान का जो योजना है, जिसके कारण वो जो अनावश्यक है जो जनसंख्या उसका है ना, उसको खत्म करना चाहते हैं, उसका नाश करना चाहते हैं। एक्चुअली भगवान का योजना नहीं है, भगवान तो एक्चुअली दिव्य है, भगवान तो दयालु है। You see, the Lord, he doesn't kill anyone or anything except these demons, but the ignorant living entities, they are vanquished by their own karma because they have taken shelter of ignorance. You see, तो देखा जाए तो ये भगवान का जो योजना नहीं बोल सकते इसको, लेकिन जो जितने जो जीव हैं, वो जीव अपने अपने कर्मों के कारण उनका जो ये कष्ट आके और वो उनका खात्मा हो रहा है, अपने अपने कर्मों के हिसाब से वो भुगत रहे हैं, उसका जो भुगतान कर रहे हैं। वो कोई मर रहा है अपने कर्मों के कारण, इस रोग से मर रहा है। yes, you can see people are killing themselves. So many times we have to assure people, don't be worried. Come for satsang, chant the holy names, take prasad, read the books of God. You see, like that. तो कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को बोलते हैं आप ये सब इतना आप तनाव में मत आइए, मानसिक तनाव मत लीजिए, आप आइए, हमारे प्रोग्राम में हमारी बहुत सारी प्रवचन हो रहे हैं, बहुत सारे हमारी कक्षाएं हो रही है, ऑनलाइन कक्षाएं हो रही है, आइए हमारे वन मंदिर में आइए, वहां पे आके प्रसाद ग्रहण करिए, दर्शन करिए भगवान का, भगवान के प्रवचन सुनिए, उनकी कथा सुनिए। हम सबको यही सलाह देते हैं उनको। Yeah, we don't even want people to come to our temples. We tell them that in your house you make it a Nam Hatta. You make it a Nam Hatta, you invite people. Yari Dako Tare Kaho. That was started by Lord Nityananda. And then Bhakti Vinod Thakur, a great acharya, brought it to a height. And then there's Srila Jayapataka Maharaj, Srila Purushottam Maharaj, so many of their followers and disciples, and other disciples all over the world, they are building up this, Bhakti Vriks, which is Nam Hatta actually. तो हम तो लोगों को ये भी बोलते हैं कि फिर भी आप मंदिर में आपका आने की आवश्यकता नहीं है, आप घर में ही अपने घर में बैठे बैठे आप आसपास के लोगों को बुलाइए और हम लोग आएंगे, वहां पे हम कर सकते हैं। जैसे कि अभी इसको जो आंदोलन को बढ़ाने के लिए चैतन्य महाप्रभु, परम पूजनीय जयपताका महाराज, परम पूजनीय भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जो बहुत सारा प्रचार कर रहे हैं, भक्ति भिक्षा कर रहे हैं, तो एक्चुअली भक्ति भिक्षा वो एक नाम हट्टा ही है। So now people never understood what is this Bhakti Bhiksha. Like Lord Chaitanya told Lord Nityananda and Haridas Thakur, go to every door and knock in Navadvip and beg of them to chant the holy name. तो एक्चुअली ये भक्ति भिक्षा का लोग समझ नहीं पाए, और ये तभी एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया था कि नित्यानंद हरिदास ठाकुर को कि आप घर घर जाइए, हर घर घर का दरवाजा खटखटाइए, उनको
घर 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 के चौखट पे जाके उनको बोलिए कि आप भगवान का नाम लीजिए, हरि नाम करिए आप। Yeah, so right now we may have our big temples, but our temples were closed, our temples were restricted, and it became a big problem. And even if our temples were open, not even maybe 5% of the population will come to our temples. You see? Yes. तो देखा जाए तो जो मंदिरों के बड़े बड़े मंदिर है हमारे, लेकिन ये कि पेंडेमिक के कारण, ये जो महामारी के कारण बंद हो गए थे मंदिर तो उस टाइम में। और इवन देखा जाए तो जब खुले भी तो कितने, जितनी जो जनसंख्या उसका 5% ही जनसंख्या जो मंदिर में आती थी। Yes. So Hazrat Muhammad said that if the mountain will not come to Muhammad, then Muhammad will go to the mountain. तो जो मोहम्मद जब बोला है उन्होंने, जो प्रॉफिट थे इनके हजरत मोहम्मद, उन्हें बोला अगर पर्वत हमारे पास नहीं तो हम पर्वतों के पास जाएंगे। So therefore, the Lord is very merciful. He knows that the people will not come to him in Kali Yuga. Therefore, he comes with Sri Chaitanya Mahaprabhu along with Lord Nityananda and the Panchatattva and all their followers, and they go to everyone and they chant on the streets. So this is the Yuga Dharma. Yes. तो इसलिए जो देखा जाए तो जब चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने वो खुद यहाँ पे हुए, क्योंकि उनको मालूम है कि ये लोग अगर नहीं आते हैं उनका अच्छा नहीं तो हम खुद जाएंगे, इसलिए खुद यहाँ पे अपने पार्षदों के साथ, नित्यानंद के साथ अपने पार्षदों के साथ यहाँ पे आए, और वो हर जगह जा जाके उनकी भगवान की प्रेम भक्ति, भगवान का प्रेम देने के लिए वो अवतरित हुए इसके लिए। Yes. Krishna Varnam Trisha Krishnam Pango Sangastra Parshadam Yagnair Sankirtanaya prayer Yajantihi Sumedasam. Sumed. Only intelligent people will take to this very strongly, this Yagnair Sankirtanaya prayer. तो सिर्फ जो जितने जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस युग में है ना, ये इस जो संकीर्तन यज्ञ का उसको अपनाएंगे और संकीर्तन आंदोलन को अपनाएंगे, उसमें शामिल होंगे। And India is such a beautiful place. You won't believe it. That I go everywhere we go, and we give prasad, in packets, small, Shankar Palis and all to the policemen, to the storekeepers. We give them calendars of Radha Madhav, Radha Sham Sundar. People are just taking it and they don't forget you. This is the preaching. We should not be so temple centric. We ask people, why don't you come there, and people can't come. That's only maybe for a big festival, and that's how many people come. But if we go to people, spend time with them in their houses and all, that is the spiritual world. तो देखा जाए तो हम लोग कई बार बोलते हैं भक्तों को कि आइए आइए मंदिर आइए, अरे नहीं आएंगे वो मंदिर, इतना इससे अच्छा कि हम लोगों को है ना, सबसे अच्छी चीज है कि हम उनके घर घर जाके जाए, और घर घर जाके उनको जैसा भी हम प्रसाद देते हैं, शक्कर पारा छोटे छोटे पॉकेट में लेके जाते हैं हम छोटे छोटे, और उनको शक्कर पारा वगैरह देते हैं, और बहुत वो खुश होते हैं और आनंदित होते हैं, और हमारा संपर्क बढ़ता है। तो यही वेंकुट लोग है कि जब हम घर घर जाके जब हम उनको जाके प्रसाद वितरण करते हैं, भगवान का कुछ बताते हैं, उनका ही नाम लेके बोलते हैं, तो यही वेंकुट लोग का जो वातावरण यही है। And they automatically say Hare Krishna. Like you go to fill petrol, there are 16 workers there, you give them 16 packets of Shankar Pali. You go by the bars, you ask them kitne log yahan pe hai, so they say 14 log, acha 14 log. They automatically say Hare Krishna. You don't have to ask them to say Hare Krishna. That is the preaching that goes on in Kali Yuga with Lord Chaitanya, and Prabhupada was the genius who presented it perfectly. तो इसलिए हम देखा जाए तो जब हम कहीं किसी बहुत बड़े जो फैक्ट्री में जाते हैं, किसी उद्योग में जाते हैं, तो वहाँ पे पूछते हैं कितने हैं, हाँ भाई वहाँ पे आदमी बोले 60 है, तो हम पूरा 60 पैकेट जब देने लगते हैं तो खुद ही हरे कृष्ण कहते हैं, हमको बोले की आवश्यकता भी नहीं है, या कहीं 14 कितने आदमी 14 आदमी, ठीक है उनको देते हैं, वो खुद ही हरे कृष्ण कहते हैं, हमको बोलने की आवश्यकता, वही खुद ही आगे बढ़ के हरे कृष्ण बोलते हैं। तो ये इसका इतना मतलब प्रभुपाद इतने मतलब बुद्धिमान थे कि उन्होंने ये जो आंदोलन को जो प्रचार के लिए कितना अच्छा हमको मतलब दिया है, हमको अच्छी कि भाई एक ट्रिक दिया है कि ये ट्रिक लगाएंगे तो हम लोग खुद ही हरे कृष्ण भगवान का नाम लेंगे, प्रसाद देने मात्र से थोड़ा सा प्रसाद देंगे, हरे कृष्ण बोलेंगे, भगवान का नाम लेंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर से एक दिन ग्रह भजन देखी गोलोको एव भाया, one day I'm doing my bhajan and my house I can see it's Golok Vrindavan. So that's our goal, make every house into a Golok Vrindavan. तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला कि मैं जैसे ही कोई भजन कीर्तन करता हूँ तो घर में तो वो मुझे ऐसा लगता है गोलोक धाम आ गया इधर। तो वैसे हमको भी हर घर में जाके मंदिर बनाना, हर घर में
मंदिर का मतलब गोलोक हमें धाम को स्थापित करना, हर घर घर में जाके प्रचार के द्वारा। Yeah, so that's what Bhakti Charu Maharaj is saying. Srila Bhakti Charu Maharaj, he was saying that actually ISKCON is non-different from the spiritual world. जो परम पूजनीय भक्ति चारू महाराज थे, वो बोलते थे कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत है, वो एक्चुअली आध्यात्मिक जगत ही है वो। Yeah, and he said actually, if you have a choice, ISKCON is more interesting to be in than the spiritual world. तो अगर लेकिन कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि कौन सी चीज हमें चुनना है, तो आप है ना जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत ये है, ये आप चुनेंगे, आध्यात्मिक जगत से ज्यादा आपको इधर ही अच्छा लगेगा आपको। He says because in the spiritual world there's no one to preach to, everyone is Krishna conscious. So here you come and preach, बड़ा मजा आता है। तो परम पूज्य बच्चा बोलते हैं क्योंकि आप है ना आध्यात्मिक जगत में क्यों नहीं आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वहां प्रचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो प्रचार की जो सेवा है उससे आप वंचित रह जाते हो, इसलिए आपको उतना आनंद नहीं आएगा जितना आनंद यहाँ पे, क्योंकि आप में प्रचार की बहुत सारे अवसर मिलेंगे, आपको बहुत सारी प्रचार की सेवा है आपके पास में, तो इसलिए आपको बहुत आनंद आता है यहाँ पे प्रचार करने में। ऐसा आनंद उधर नहीं आएगा आध्यात्मिक जगत में। So that's why when Krishna wants to fight, then he arranges that this giant Vijay misbehave because he needs to fight. Like Prabhupada said, when a king wants to fight, then he chooses the strongest wrestlers to fight with because it gives him great pleasure. इसलिए बोलते हैं कि जब यहाँ पे आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आना चाहते थे कृष्णा, तो उन्हें जय विजय को उनसे युद्ध करने के लिए उन्होंने उसको चुना। तो वैसे ठीक वैसे ही जो राजा जैसे करता है कि राजा को भी अगर जब इच्छा हो जाती है युद्ध करने की या कुछ लड़ाई करने की, तो है ना जो अपने जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो योद्धा है उनको चुनता है और उसके साथ युद्ध करता है। Yeah, so therefore he gets bored in the spiritual world, especially in Vaikuntha. In Golok it's different because the cowherd boys, they stand on his shoulders and defeat him. इसलिए जो कृष्ण है उसको वहां पे जो वैकुंठ लोक पे बहुत बोर लगता है, लेकिन उनको गोलोक में ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि वो लोग इवन उसके साथ खेलते हैं, उठते बैठते हैं, उसके इवन उसके कंधे के ऊपर चढ़ जाते हैं भगवान के। इसमें बहुत आनंद आता है उनके जब जो संगी है उनके पास, उनके कंधे के दोस्त है वो चढ़ जाते हैं। So there is a very nice pastime. When Brijvasi told me that once, they covered the Balram Paksha and the Krishna Paksha, they were playing games, and then the Balram Paksha won. So actually Krishna and all his cowherd boys had to take Balram and the cowherd boys on their shoulder and run. तो बोलते हैं कि जैसे एक बार वहां पे जब खेल रहे थे सब बलराम और कृष्णा और वहां पे वृंदावन में, तो उन्होंने उनको ऐसी शर्त की जो इस खेल में जो हारेगा वो है ना, वो जो जीतने वाली पार्टी है उसको है ना अपने कंधों पे उठा के लेके जाएगा। So Krishna never, sorry Prabhu, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो इसलिए तो उसमें जैसे मान लो जैसे बलराम जी जो हार गए, तो अभी जो कृष्णा है ना उनको लेके जाना उनके अपने कंधों पे। कृष्ण उनकी जो टीम है, उनके जो ग्वाले हैं, उनके साथ जो संग में थे, उनके साथ में थे, उनको लेके जाना उनको कंधों में बिठा के। तो ऑलवेज जैसा होता है ना, जब भी कुश्ती लड़ना है तो श्रीदाम जाता है। श्रीदाम goes to actually fight with Krishna because he must put Krishna down and defeat him. So that's why whenever there is a wrestling is there or some kushti is there, so then that time he always Sridhama, he will go and he will fight with the Krishna. He will make sure that he should put him down and he should defeat him. That is why when Krishna defeated Kamsa, when he killed Kamsa and dragged him around the arena, then all the cowherd boys came and said, "Hey, Kana, you are what? What is this? This is a miracle. This great demon, you have killed him. Chalo, let's wrestle." So Krishna wrestled with Sridhama, and Sridhama put him down in front of everyone. And Krishna was very when जब वो कृष्ण ने जब कंस को मार दिया, नीचे गिराया और ऊपर चढ़ गया उसके ऊपर, उसको फाइट करने के मारने के टाइम में, तो सब लोग आ जाते, अरे कृष्णा तुम तो हमेशा हार जाता था, इसमें तो कुश्ती में हमेशा हारता था, आज कैसे जीत गया तुम? हम तो हैरान हो गए हैं, क्योंकि श्रीधाम हमेशा तुमको हरा देता था। हाँ, तो हमेशा उसको नीचे पटक के तुमको ऊपर चढ़ जाता तुम्हारे, आज तो तुमने उल्टा हो गया, आज तो तुमने इतना बड़ा खतरनाक राक्षस को उसको तुमने मार दिया। अरे हमको तो विश्वास नहीं होता तुमने ये किया काम। So then they said, let us fight. So then Krishna wrestled with Sridhama, and Sridhama put him down in front of everyone.
तो उसने बोला अभी ठीक है, अभी फिर देखते हैं हम आपके ताकत को। तो ऐसे करके फिर आपस में कुश्ती लड़ते हैं श्रीधामा और कृष्णा, और श्रीधामा तुरंत ही उसको नीचे नीचे पटक के और उनको फिर हरा देता है। देखो मैं फिर वापस जीत गया, तुम हार गए कृष्णा। So Krishna has no tinge of ego. तो कृष्णा को थोड़ा बहुत भी अहंकार नहीं उसमें, थोड़ा बहुत भी। एक कण भी अहंकार. Why? Because he does everything for the pleasure of his devotees. He is not into winning. Like today, all these kids are taught win-win situation. You're already born a loser, you live a loser, and you die a loser. But Krishna, he loses to Srimati Radharani. He loses to the coward boys. Why? Because he's only committed to serve them. He loves them so much. तो यहाँ पे देखा जाए तो जो कृष्णा वो हमेशा है ना, वो हमेशा जैसे आजकल ज्यादातर लोग तो ऐसा बस जीतना ही चाहते हैं, कोई हारना का कोई किसी को पसंद नहीं, हार का कोई स्वाद लेना ही नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ पे तो कृष्णा वो हमेशा हारना ही चाहता है, कभी राधा रानी से ही हार जाता है, अपने सखाओं से जो ग्वाले हैं उनसे हार जाता है। क्यों? क्योंकि उनसे हार जाता है, क्योंकि उनसे हारने के बाद में उसको उनका सेवा का अवसर मिलता है, और ये उनकी सेवा करना चाहता है, इसलिए बार बार हार जाते हैं उनसे, ताकि उनका सेवा का अवसर मिले उनको। क्यों उनकी सेवा करना? क्योंकि उनसे बहुत प्रेम करते हैं कृष्ण, इसलिए उनकी सेवा हमेशा करना चाहते हैं। Even in Bhandiravan, very famous one, you know, the Sakas and the Sakis, they got Krishna and Radharani together, dressed them up as wrestlers, and they said, "You fight." तो जब भांडर वन में भी जब ऐसी लीला हुई थी, तो जब इसमें जब राधा रानी और सब कृष्ण सब एक साथ में वहां पे होते हैं, तो चलो हम लोग अभी वापस कुश्ती का यहाँ पे लड़ेंगे, ऐसा करके उन्होंने बोला कृष्ण को। Yeah, and within a few seconds, Radharani put Krishna down, and she jumped on top of him and pressed his shoulders to the ground for 3 counts, and he had lost actually. तो बोलते हैं कि राधा रानी एकदम उसके ऊपर चढ़ाई कर दिया कृष्ण को, और कृष्ण को नीचे गिरा दिया, नीचे गिराने का रूप पर चढ़ गई, और उनको है ना उनके जो कंधे हैं, उनके जो गर्दन उसको नीचे जमीन पे स्पर्श करा दिया, और बोलता था 1 2 3 करके उसको किया, और अभी तुम उठ नहीं पा रहे, इसका तुम हार गए, अभी मैं जीत गई। So Radharani was pressing him, and in that her nose was touching the ground, and Krishna's nose was looking up because he was on his back. So Radharani said, "Badtameez, now you मान लो कि तुम हार गए." You know, so like that. So Krishna is still laughing. तो ये क्योंकि राधा रानी उसको नीचे नीचे एकदम उसको हमेशा जमीन से स्पर्श कर रही थी, लेकिन जो उसका नाक तो ऊपर ही था, कृष्णा का नाक ऊपर ही था, लेकिन राधा रानी इसको नीचे झुका रही थी, तो उनका नाक स्पर्श हो रहा था जमीन से। तो बोलते हैं बदतमीज आदमी, तो मैंने क्यों नहीं अपनी नाक को नीचे नीचे झुका के उसको स्पर्श करता था कि तुम हार गए, क्यों नहीं मानते आपकी हार, ऐसा करके उसको बोलती है। तो Krishna said, "Chup बैठ. Your nose is touching the ground and my own nose is looking up, so therefore I am the winner." तो कृष्णा ने बोला, अरे तुम चुप बैठ, तुम मेरे को बदतमीज क्या कहती है, तुम्हारी हार है, क्योंकि तुम्हारी जो नाक है वो नीचे बार बार स्पर्श करी है, मेरी नाक अभी भी ऊपर है, आसमान की तरफ देख रही है, इसलिए तुम हार गए, तुम चुप बैठो अभी, तो मैं जीत गया। So this is what you call a win-win situation. This is called a win-win situation, where in the spiritual world the devotees and the Krishna are competing to serve each other. Who can serve each other more? You understand? तो यहाँ पे जो है ना देखा जाए तो जैसे कि आध्यात्मिक जगत में है, हमेशा जीत तुम भी जीतो हम भी जीते, ये वाला अवस्था है वहां पे कि तुम भी जीतो मैं भी जीतूं, दोनों हम जीतना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे उनका आपस में प्रतिस्पर्धा चलती है, कौन किसकी ज्यादा सेवा करता है, ऐसा करके तो ज्यादा सेवा करना चाहते हैं एक दूसरे की, वो इसलिए वहां पे ये हमेशा प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। यही है वहाँ का जो माहौल है, उधर का जो वातावरण ऐसा है। So that's what Krishna tells Arjuna, do thou fight for the sake of fighting. Don't bother about victory or defeat. Just do thou fight for the sake of fighting. You're a Kshatriya, now's your duty to fight. Forget about victory and defeat. Forget about fame and infamy. You just fight. इसलिए जैसे कृष्ण इसलिए अर्जुन को बोलते हैं कि आपको सिर्फ अपना कर्तव्य का पालन करना, आपका कर्तव्य है क्षत्रिय होने के नाते आपको युद्ध करना है, इसलिए आप युद्ध करिए। तो आप ये मत सोचे कि उसमें हारूंगा और ये कई लोग मारे जाएंगे, ये होगा वैसा होगा, नहीं, वो सब आपको आवश्यकता नहीं सोचने की, हारेंगे जीतेंगे क्या होगा। आपको सिर्फ जो कर्तव्य उसका पालन कर, उसका जो फल क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, और परिणाम के ऊपर आप चिंता मत करो।
So similarly, in ISKCON, the problems come when devotees become attached to material results. Who has done better than the other? Who has opened more temples? Who has distributed more books? Who has collected more? That's where we all fight actually, because we are attached to material results. तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत में भी ऐसा ही होता है कि कभी कभी हम लोग भौतिक जो परिणाम है उनसे हम ज्यादा आसक्त होने के कारण तो ऐसा लगता है उसने कितने ज्यादा मंदिर उसने निर्माण किया, उसने कितने ज्यादा पुस्तक वितरण किया है, तो हम उसका जो परिणाम है, जो भौतिक परिणाम, उससे आसक्त होने के कारण फिर हम आपस में एक दूसरे से टकराव होने लगता है. So you see, we are bothered about building loving relationships with each other within the heart. The heart is our kshetra. Yam shama sundaram achintya guna surupam premanjana charita bhakti vilochanena santa saddaiva hridayeshu vilokayanti. So we have a heart-to-heart connection where we are building up these temples in each other's hearts, where we worship the Lord and glorify and also glorify each other and serve each other and love each other. This is the movement of ISKCON. तो इसलिए जैसे हम लोगों को जैसे जो मंदिर बाहर बने से अच्छा है कि हम लोग अपने हृदय में सबको मंदिर को का निर्माण करें और एक दूसरे से अच्छा रिश्ता बना के, और ताकि हम एक दूसरे से प्रेम करते रहें और एक दूसरे की सेवा करते रहेंगे और एक दूसरे के से हमारा जब प्रेम भाव और सेवा बढ़ेगी तो वो एक जो हमारा एक अच्छा एक वातावरण उसका उत्पन्न होगा और सब लोग आनंदित रहेंगे, सब खुश रहेंगे और अच्छा प्रचार भी होगा. Yes, this is so important actually. So actually Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said, you have to give any amount of your blood, hundreds of bottles of blood to make one Vaishnava. इसलिए श्रील भक्ति ठाकुर ने भी ये बताया है कि अगर आपको कितना भी आपको खून आपको बहाना पड़े, कितना भी खून आपको देना पड़े, सिर्फ एक वैष्णव का अगर एक जीव को वैष्णव बनाना है अगर तो आपको जरूर करना चाहिए आपको. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया है कि आपको कितना भी खून क्यों नहीं आपको उसका उपयोग करना पड़े, लेकिन आप जरूर करना चाहिए. आपका खून कितना भी बहाना पड़े, कितना भी उसका उपयोग करना पड़े, लेकिन एक जीव को वैष्णव जरूर बनाना चाहिए. But Srila Prabhupada said it is even more difficult to maintain a devotee than to make a devotee. लेकिन श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि भक्तों को जो है ना उनका रख रखाव करना वो बहुत ज्यादा कठिन है भक्त बनाने की तुलना में. We have to see to the welfare of our devotees, and we have such a weak infrastructure in ISKCON for aging devotees, for sick devotees, for devotees who are dying. We have built big temples, which is very glorious and wonderful. But now, what about those devotees who had given their lives to build these temples? They become old. So now we have to really take proper care of them. So when they return to the spiritual world, they feel that there was so much of love given to them to assist them to get back to the spiritual world. तो इसके लिए जब हम लोग देखा जाए तो इससे हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत में जो अभी जो हमारा जैसा चल रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि अभी जो जिन लोगों ने बड़े-बड़े मंदिर की स्थापना की, मंदिर बना निर्माण किया उन्होंने, तो वो काफी अभी वृद्ध हो चुके हैं. तो हम उसमें अगर वृद्धों की अगर हम लोग अगर सही ढंग से उसकी सेवा शुश्रूषा नहीं करेंगे, उनका देखरेख नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. लेकिन जब उनकी देखरेख करेंगे, सेवा करेंगे, तो जब वो आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो जो हमारे जो सही जो उद्देश्य है हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना का वो हम उसकी पूर्ति होती है, नहीं तो उसकी पूर्ति नहीं हो पाए, उद्देश्य का जो हम सफल नहीं हो पाएंगे उद्देश्य पाने में. We are not bothered about the Vedas. We are not bothered about austerities. We are not bothered about going to the holy places. We are not bothered about anything. We are only bothered about wherever the devotees are calling out to the Lord helplessly. Be there because you'll be damn sure that the Lord must come there. This is our Siddhanta. तो इसलिए हम लोगों को किधर भी नहीं जाने का, कि तीर्थ स्थलों में जाना, इधर जाना, उधर जाना, वो नहीं. सबसे ज्यादा हमें महत्व देना चाहिए. हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज, हमारी महत्वपूर्ण सेवा होनी चाहिए कि हम भक्तों के पास में जाएं और भक्तों की जाके मिले और उनके साथ जाके सेवा करें. ये हमारे उनको प्रेम दे, उनके रखरखाव करें, उनका देखरेख करें. ये सबसे ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए. That's why you see when Krishna was leaving for Dwarka, Queen Kunti offered him those 26 beautiful prayers. And he was so enchanted that he simply smiled very gently, understanding that, Kunti, you have purchased me.
She's his aunt actually. तो इसलिए जब द्वारका की तरफ जब रवाना हो रहे थे कृष्ण, तो यहाँ कुंती उसको 26 जो है ना अच्छे अच्छे उसने उन्होंने उनको अच्छे मतलब what you told Prabhu, that one he offered eatables, no? 26 prayers Kunti Maharani offered. अच्छा, prayers offer prayers, हाँ? 26 prayers. हाँ, तो जब कुंती महारानी है ना उनको 26 जो प्रार्थना है उनको है ना अर्पित करती है, 26 प्रार्थना है, तो कृष्ण बहुत गदगद हो जाते हैं, बहुत प्रसन्नचित हो जाते हैं कृष्ण उनसे, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं उनसे, कुंती महारानी से। Then Yudhishthir Maharaj came and said that, why are you going? Please stay. तब युधिष्ठिर महाराज आते हैं और बोलते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं, अभी आप इधर ही रहिए आप। You see, so Krishna's only interested, so Krishna changed his plans. Then Uttara called out to Krishna before that, when this Ashwatthama had thrown that Brahmastra towards a womb to kill Parikshit. तो आप देखेंगे जब उत्तरा भी जब बहुत उसमें कठिन समय आया उनका कि जब वो उनके जो गर्भ में जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़कर गर्भ में उनके जो परीक्षित महाराज थे उस टाइम में गर्भ में उनको मारने का प्रयास किया था, तब भी वह ना कृष्ण की शरण ली थी, कृष्ण को पुकारा था उन्होंने। So Krishna immediately covered up the womb of Draupadi, of Uttara, and he also, in his four-handed form, he was protecting Parikshit Maharaj. Some acharyas say that his body was destroyed and Krishna gave him another body in the mother's womb. And other acharyas say that, he was as the super soul. He was swinging his gada in all directions in the womb of Uttara, in the heart of Parikshit, and even in the womb of Uttara, protecting, Parikshit Maharaj. तो इसलिए कुछ आचार्य ऐसे बोलते हैं कि जैसे कि जब वो अश्वत्थामा जब उसका छोड़ा उन्हें ब्रह्मास्त्र, तो उनका जो शरीर है जो परीक्षित का वो नष्ट हो गया, इसलिए तुरंत ही वो अंदर जाके कृष्ण ने उनको दूसरा शरीर प्रदान किया। लेकिन कुछ आचार्य कह रहे हैं क्योंकि वो परमात्मा वो वहीं पे ही विद्यमान है हमेशा, तो उत्तरा के गर्भ में ही थे, वो तो उपस्थित थे, तो इन्होंने जैसे ही उन्होंने देखा कि आ रहा है ब्रह्मास्त्र, तो उन्होंने तुरंत अपनी गदा के द्वारा उन्होंने चारों तरफ वो गर्भ के चारों तरफ एक ठंडी सी सतह बना दी, तो परीक्षित महाराज को ठंडा ठंडा लगने लगा, गर्मी का उनका अनुभव ही नहीं होने दिया। तो ये अलग अलग आचार्य की टीका है। Same thing when Draupadi, she lost her 5 sons. She immediately began to cry, and she immediately went, to the Lord. Immediately, you see, she had that faith. Similarly, when she was being stripped naked, she called out to Krishna because no one could protect her. इसलिए इवन जब द्रौपदी का अगर आप देखेंगे तो उस द्रौपदी के सब 5 पुत्र की जब हत्या की थी, अश्वत्थामा ने तुरंत ही वो इतनी दुखी हो गई थी, तो दुखी होने के बाद तुरंत ही वो गोविंद मतलब कृष्ण के पास गई, और इवन जब उनको बड़ी सभा में जब उनका अपमानित किया जा रहा था, तो उस टाइम में भी वो सिर्फ कृष्ण को ही पुकारा अपनी सहायता के लिए उन्होंने। Now here in this chapter, before I'll complete that pastime of Krishna carrying this covered boy. So he was carrying this covered boy on his shoulders, and as they were running along, who came? Durvasa Muni came. तो बोलते हैं कि जब है ना अभी मैं वापस वो लीला में जाऊंगा, जब वो कृष्ण और बलराम ये सब उसमें खेल रहे हैं और उसमें जो हरा देते हैं कृष्ण को, ये बलराम की जो टीम है, तो अभी ये जो जा रहे हैं कृष्ण से उठा के लेके जा रहे हैं, और जो जीते हैं उनको, तो अचानक ही रास्ते में उनकी मुलाकात है वो दुर्वासा मुनि से हो जाती है। हाँ, दुर्वासा मुनि। So Durvasa Muni, he can only see Krishna as Param Brahman. He cannot see him as Yashoda. तो आपको मालूम है, आपको दुर्वासा मुनि से उसको परम ब्रह्मन मानते हैं कि कृष्ण को, बाकी और कुछ नहीं मानते उनको, ऐसा कुछ ये भगवान के हो सकते हैं और भगवान लीला ऐसे कर सकते हैं, ये उनको नहीं समझ में आता। वो तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहा है, he said, what are you doing? How are you standing on the shoulders of Param Brahma? Do you know who he is? He immediately stopped them and he started shouting at the covered boy on Krishna's shoulder. तो है ना वो एकदम तुरंत ही उसको जैसे देखता एकदम गुस्सा हो गया, अरे अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम इतने परम ब्रह्मन के, तुम है ना उसके अपने पैरों को उसके ऊपर रखा हुआ, तुम अरे नीचे उतरो, तुरंत नीचे उतरो, उसको डांटने लगे, नीचे उतरो नीचे, वो समझ में भी आ रहा तुम क्या कर रहे हो, उसको डांटने लगे उस क्रोध में आके।
So this coward boy वैसे ही चिढ़ गया, उसने मुस्कुराते ही उन्होंने कहा, he said, he caught the दाढ़ी of Durvas Muni and said, अरे महाराज क्या परम ब्रह्म है, ये तो लाला है, ये तो काला है, ये तो हार गए, चल भाग घोड़े, you know like that. So then he just he came down this Wala, his friend, he came down, Krishna friend, and he just catch hold of the beard of the Durvasa. He said, oh, what do you think? He is a Bhagwan, he is a Parampram. No, he is our Lala, he is our friend. And go, you know, get out from here and don't interfere in our game and all this, our enjoyment. So फिर वो छोड़ा नहीं, he did not leave. Then Krishna told in his ear, Durvas, don't spoil my pastimes in Vrindavan, please go away. फिर वो निकल. But still is दुर्वासा जी है ना, वो एक्चुअली वो फिर भी जाने को तैयार नहीं थे वहां से, वो जितना अड़ गए तो फिर तुरंत कृष्ण ने उनको बोला, मैं आधे से तुम जाओ इधर से, तुम्हें ना अभी मेरे जो लीला है जो वृंदावन की, उसको है ना तुम्हें जो मेरा जो आनंद है उसमें तुम विघ्न मत डालो, निकलो यहाँ से, वृंदावन से बाहर निकलो, तुम जाओ इधर से, भगा दिया उनको. Yeah, you see like that. So similarly, we should not strive to get back to the spiritual world. We should be here in this material world, ready to stay for life after life and spread this mission of Lord Chaitanya. इसलिए हम लोगों को है ना आध्यात्मिक जगत में जाने का प्रयास करने से जो ज्यादा अच्छा ये हुआ कि हमें ना यहीं पे हर जन्म में इस भौतिक जगत में रह के हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम चैतन्य महाप्रभु का जो ये आंदोलन है इसका ज्यादा प्रचार करें, ज्यादा इसको विस्तारित करें हम. Srila Prabhupada said that, you know, the spiritual master tells a neophyte disciple, okay, you somehow get back to the spiritual world. तो इसलिए कभी प्रभुपाद बोलते हैं कि कभी जो नए भक्त उनको भी बोलते हैं कि तुम भी गुरु बन सकते हो, तुम भी प्रचार करो, तुम भी गुरु बन जाओ. But to an advanced devotee, he tells him, you keep coming back here again and again. लेकिन जो बहुत उन्नत भक्त है उनको बोलते हैं नहीं, आपको बार यहाँ पे आना है, आपको, उनको बोलते हैं बार आओ इधर. उन्नत भक्तों को ऐसा बोलते हैं. Yeah, mama janmanishware bhavata bhakti. He rejects this moksha, Lord Chaitanya. तो भगवान चैतन्य ने जैसे बोला मम जन्मेश्वर भवता भक्ति है, तो इससे उन्होंने ये मोक्ष का जो ये जो है जो कॉन्सेप्ट मोक्ष का जो विचारधारा है उसको उन्होंने पूरा निष्कासित कर दिया. नहीं चाहिए हमको, तो हर जन्म में आने के इधर भगवान की भक्ति करना, भक्ति देना है. That's why in the Ramanuja Leela, when Lord Ramanuja left this world, Ramanujacharya, then Ranganath Swami was crying in his absence. So he had to come back as Varavara Muni. He came back in a short while as Varavara Muni. Because Ranganath said, I cannot live without you. I have come here to this earth planet. And you know, now you've gone back to the spiritual world. No, you come back. I cannot live without you. See, this is what you call Shuddha Bhakti. You understand? तो आप देखेंगे रामानुजाचार्य के जब लीला में उसमें देखेंगे कि तो रंगनाथ जी जब रामानुजाचार्य अपने जो लीलाओं खत्म करके चले गए तो उन्होंने बोला नहीं, रंगनाथ एकदम उनको पुकारने लगे, नहीं आप वापस आ जाओ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता है. तो उन्होंने बारह मुनि के रूप में फिर उनको आना पड़ा यहाँ पे. तो yeah, so exactly. Similarly, Jagai and Madai, they were not satisfied getting that type of moksha, you know, by getting killed by the Lord, right? But they wanted that Krishna prem, right? Tara Sakshi Jagai and Madai. They wanted to come and taste that Krishna prem, which is so freely available by the mercy of Prabhupada and his devotees, right? तो लेकिन आप देखेंगे जो इसमें जो जगाई मदाई की लीला में उसमें आप देखते हैं कि जब वो चैतन्य महाप्रभु उनको मारना चाहते थे तो उनको तब मोक्ष को मारना, उनको मोक्ष मिल जाएगा, भगवान चैतन्य हमको अगर मारे, लेकिन वो नहीं चाहते ऐसा टाइप का मोक्ष. बोलते नहीं, हम तो हमेशा ये जो कृष्ण प्रेम का जो स्वाद है उसको हम चखना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों को यहीं पर रहने दो, ताकि हम जब तक कृष्ण प्रेम का हम स्वाद नहीं चख लेते तब तक हम नहीं जाना चाहते यहाँ से. ये जो प्रभुपाद और जो हमारा जो उनकी कृपा से हमें बहुत आसानी से उपलब्ध है, उनके शिष्य और प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा भक्त लोगों के संग में रह के हम आसानी से इसको चख सकते हैं कृष्ण प्रेम को. So Vasudev Datta, he said, my Lord, all the sins of all the creation, give it to me in this universe. And let me suffer eternally, but you take all these living entities back to God. तो इसलिए वासुदेव दत्त अपने करुणा बोलते थे हमेशा, चैतन्य महाप्रभु जितने भी संसार के लोगों के जितने भी पाप है वो सब मेरे ऊपर डाल दो,
और मेरे को हमेशा इधर ही सड़ने दो, ये भौतिक जगत में यहाँ पे दुखी होने दो मुझे, कोई परवाह नहीं मुझे। सिर्फ ये जितने भी जो भौतिक जगत में लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, बुद्ध की बदी, उनको आप लेके जाओ साथ में, बस मुझे अकेले को रहने दो इधर। The Lord Chaitanya began to cry. He said, Vasudev Datta, you have purchased me. You can take me and sell me in the marketplace. He said, you are none other than Prahlad Maharaj. You are an ocean of compassion. You see? तो वासुदेव दत्त का ये बात सुन के एकदम चैतन्य महाप्रभु को रोना आ गया उनको, और रोते रोते वो बोलने लगे कि हे वासुदेव दत्त, आपकी जो करुणा के कारण, आपका ये जो करुणामयी जो आपके गुणवत्ता के कारण, गुण के कारण आपने मेरे को है ना खरीद लिया है। आपको जहां भी लेके जाके मेरे को बेचना, मुझे बेच दो कहीं भी, किसी मार्केट में जाके, किधर भी, मैं अब बिक चुका हूँ आपके हाथों में। तो ये जो है ना, उन्होंने बोला कि चैतन्य महाप्रभु ने, आप तो प्रहलाद महाराज हैं, जैसे करुणा प्रहलाद महाराज जैसे आपने है, आप बहुत धन्य है कि आपके प्रहलाद महाराज जैसा आपने करुणा, आप प्रहलाद महाराज से भिन्न नहीं है आप। And similarly, Srila Jayapataka Swami Maharaj, he had a dream once. And then Narad Muni came in the dream. He said, come with me to the spiritual world. You've done enough. Come, you must come with me. और वैसे ही जो श्रीला जयप्रकाश स्वामी महाराज जी के सपने में भी जो है वो आए, नारद मुनि आए और उनको बोले कि आपको अभी इतना ज्यादा बहुत कुछ हो गया, आपने बहुत कुछ आपने यहाँ पे किया, आपने बहुत कुछ प्रचार हो चुका, अभी आप तुरंत आ जाओ आध्यात्मिक जगत में, अभी आपको आवश्यकता नहीं यहाँ पे ज्यादा रहने की, ऐसा करके उन्होंने बोला। Yeah, but Sri Jayapataka Maharaj said that no, I will not come now. My Guru Maharaj has given me a mission. I have to fulfill that mission. We will see later on. This is what you call a great devotee in the mode of Prahlad Maharaj. तो लेकिन जब श्रीला जयप्रकाश महाराज ने उनको बोला कि नहीं, मैं है ना अभी नहीं आ सकता, मैं, मेरे जो गुरु महाराज ने मुझे ये है ना मुझे जो दिया है, ये उत्तरदायित्व दिया है, प्रचार की जो उत्तरदायित्व दिया, उनका जो आंदोलन को विस्तार करने के लिए, वो अभी तक मैंने पूरा नहीं किया है, इसलिए मैं नहीं आऊंगा अभी आपके साथ आदिम जगत। तो ये है एक्चुअली प्रहलाद महाराज का जो भाव है, ये जो हम सब में होना चाहिए। And what an acharya Srila Jayapataka Maharaj. You know, people say, talking about, ancient times, talking modern times. What an acharya. Whatever is going on in his body is incomparable. The kind of sufferings that they are there, that, for his body. But you see this great personality. He's reaching out, giving Krishna consciousness to everyone. I just read when he was in this hospital in Tamil Nadu. He told the nurse, I won't let you, do anything unless you chant Hare Krishna. The doctor, he got everyone to chant Hare Krishna. That's a great devotee, because Golokera Premanadana Harinama Sankirtan. He is already in the spiritual world, but physically he is here to fulfill the mission of his spiritual master. तो मैंने अभी जैसे पढ़ रहा था कहीं, और उसमें लिखा हुआ था कि जो चेन्नई के बारे में, अस्पताल के का जो एक किस्सा लिखा हुआ था उन्होंने, कि जब वो उसको नर्स जब उसको लगा रही थी, उसको जो सिरिंज लगाने के लिए, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं तभी सिरिंज लगाने दूंगा जब आप हरे कृष्ण बोलोगे। हरे कृष्ण करने के बाद कोई भी आप मेरे शरीर पे जो भी गतिविधि करना, पहले हरे कृष्ण बोल के भगवान का नाम लेके फिर करने का। तो इवन उनको अपनी चिंता नहीं है शरीर की, उनके शरीर में क्या हो रहा है, इतनी मतलब बहुत ज्यादा खराब उनका जो कष्टमय स्थिति में है, वो उनका पूरा शरीर जर्जर हो चुका है, लेकिन फिर भी वो गोलोक वृंदावन में अभी उनका, भले वो भौतिक रूप से इधर है, लेकिन है तो गोलोक वृंदावन में गोलोक प्रेम, मतलब वहां पे सब जो प्रेम का, जो कृष्ण प्रेम का आस्वाद कर रहे हैं, वैसे वो भी प्रेम का आस्वाद कर, वो यही प्रेम का चाहते कि दूसरे लोग भी आस्वादन करें, इसलिए वो बोलते सब लोग हरि नाम कीर्तन कर, ताकि उनको भी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। ये है महान भक्त की जो पहचान होती है। So it is said in the Chaitanya Charitamrita that a pure devotee, he is already in the spiritual world in his spiritual form there, serving Radha and Krishna. But to give an example to the conditioned souls, he maintains another form here, and he performs all these sadhana kriyas just to give an example to the conditioned souls. तो देखा जाए तो जैसे कि बताया गया है पहले उसमें शास्त्रों में भी, चैतन्य चैतामृत में जैसे बताया गया कि जो शुद्ध भक्त तो हमेशा गोलोक वृंदावन में ही होता है, वो देखा जाए उनका राधा कृष्ण सेवा में लीन रहता है वो, लेकिन है ना संसार के जीवों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उनके सामने, और वो दूसरे रूप में यहाँ पे रहता है, और लोगों के दिखाने के लिए कि आपको कितना भी हमको
शारीरिक कष्ट क्यों नहीं है, कितना भी हम, फिर भी हमें है ना भगवान की सेवा नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा उनकी सेवा में रत लीन रहना चाहिए, तो हम जल्दी ही कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। Yes. And when Srila Jayapataka Maharaj was in Hinduja hospital, Braj Hari Prabhu told me, please, spend some time with him and all. So I used to go there and spend time with him because I have experience with, patients who are in semi-comas and all that kind of thing. Yeah. तो इसलिए जब मुझे याद है कि जब हिंदुजा हॉस्पिटल में जब महाराज वहाँ पे उनका एडमिट हुए थे, तो उस टाइम में ब्रजहरि प्रभु ने मुझे बोला था कि ये कृपया करके है ना आप है ना यहाँ के साथ रहिए, महाराज के साथ में रहिए। और वहाँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत इसका अनुभव है कि जो पेशेंट कोमा वगैरह में चले जाते हैं तो इसलिए मैं उनके साथ में वहाँ पे रहा था, मैं हिंदुजा हॉस्पिटल में महाराज के साथ। And generally, devotees, when they go in front of a patient who is comatose, they look at the body and they start getting very frightened because they think, this will happen to me. But actually, you're not this body. You're not this mind. You're spirit soul. So, there were some devotees there. They were, just there. They would look and then they would call out to Guru Maharaj and no response, this, that, stuff like that and all. But Maharaj would keep opening his eyes, his beautiful blue eyes. Yeah. Translate. हाँ, तो इसके लिए मुझे याद है कि जब है ना जैसे कई लोग जैसे देखते ही अवस्था में देखते लोगों को, तो उनको बहुत ही एकदम बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कई लोग और बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कई जो भक्त लोग भी जब देखते हैं महाराज के साथ, तो वो जोरों से गुरु महाराज करके पुकारते हैं। लेकिन गुरु महाराज भले मुंह से कुछ नहीं, लेकिन उन्हें इतनी खूबसूरत अपनी जो आंखें हैं उन्होंने खोलते थे, वो जब भी कोई उनको गुरु महाराज करके बुलाते थे। And so what I would do, I would always have these spiritual experiences with Srila Jayapataka Maharaj. And he would only open his eyes. He could not speak or anything, you see. But you could see in his eyes that he understood, he heard everything. Everything. So then, one day I told him that, Maharaj, I have a surprise visitor for you. I told him that, Maharaj, I have a surprise visitors for you. Translate. तो एक्चुअली मुझे जो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा उनके साथ, क्योंकि मैं उनके साथ था, तो मुझे याद है कि जब भी कोई उनको कुछ बोलते थे तो वो एकदम आंखें खोलते थे, बोल नहीं पाते थे भले, लेकिन आंखें खोलते थे। और आंखें खोलने से मैं समझ जाता था कि महाराज जो भी कुछ बोला जा रहा है सब समझ रहे हैं वो, लेकिन उसको है ना अपने जीभ पे नहीं ला पा रहे हैं, और आंखों के द्वारा ही मुझे लगता है उनका उत्तर मिल जाता था मुझे। तो इसलिए मैं एक दिन बोला उनको कि महाराज मैं आपको है ना एक बहुत ही ज्यादा जो आश्चर्यजनक है ना एक जो आपके पास विजिटर आएगा, जो आपको आके जो आपको मिलेगा, आपको आश्चर्यजनक आपको मैं बहुत आश्चर्य देने वाला हूँ कि एक आपके पास विजिटर आएगा जो आपको है ना आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। So then I took out these facials of Sri Sri Radha Madhav and put it just about 10 inches away from his eyes. तो मैंने राधा माधव का फिर जो था उसका जो चित्र था वो ना उसका जो सिर्फ उनके मुखारविंद, सिर्फ दोनों के मुखारविंद, हाँ, तो उनका जो फेस मतलब उनका जो मुखारविंद है ना वो राधा माधव का वो है ना, उसको 10 इंच ऊपर से मैंने महाराज के जो चेहरे के ऊपर से मैंने उनको दिखा रहा था। और ये जो है जो मुझे एक्सपीरियंस मिला, Maharaj's eyes was drinking in the nectar. They were rotating, beautiful blue eyes, drinking the nectar of Radha Madhav. I kept it for 10-15 minutes. And Maharaj was just drinking the nectar. और जब मैंने उनको देखा तो मैं एकदम ऐसा लगा कि जैसे महाराज अमृत पी रहे हैं उनके दर्शन का, और वो उनकी आंखें गोल गोल घूम रही हैं और गोल आंखें आनंदित हो रही है, और उनका अमृत पी पी के उनके राधा माधव का, और उनको गोल गोल घूम रही है जैसे नृत्य कर रही हो। ऐसा 10 मिनट तक मैंने उनको, इसलिए वो जो है उनके जो राधा माधव के जो मुखारविंद है उनको सामने 10 मिनट तक रखा रहा मैं इसके लिए। तो मैं प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो मैं खुद अपना अनुभव किया कैसे वो कितने आनंदित थे, जैसे कि जैसे खुद गोलोक के वृंदावन पहुंच गए थे महाराज, इतना आनंदित थे, उनकी आंखों से आनंद का झलक रहा था इतना। And it reminded me of this scene when Krishna drinks the beauty of Srimati Radharani with his eyes, or when the gopis drink the beauty of Krishna's every bodily feature with their eyes, just like these bumblebees that are, so thirsty for honey, nectar. तो मुझे वो अभी याद आ रहा है, वो दृश्य मुझे याद आ रहा है कि जब जो महाराज हैं जैसे कि
कृष्ण है, कृष्ण वो राधा रानी के जो उनकी आंखों में देख के उनका जो चेहरा खूबसूरत देख के उनको बहुत आनंद का अनुभव होता है और जब उसके आनंद में सागर उनका जो अमृत है उसमें डूब जाते हैं। और ठीक उसी प्रकार जैसे कि जो गोपियां भी कृष्ण के जो शारीरिक जो सुंदरता है उसकी खूबसूरती को देख के वो भी उनका अमृत पान करती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि जो मधुमक्खी है वो प्यासी है और वो है ना जाके वो फूलों का जो रस जाके है ना उसका चूसने का प्रयास करती है और उसके रस को चूस के वो आनंदित होती है फिर। At that time, I was 101% convinced that Srila Jayapataka Maharaj will come out of this situation. I was more than convinced because I could see that Krishna wanted it. He could not speak, but through his eyes and the way he looked and drank the nectar of Sri Sri Radha Madhav, you could understand that they are performing a special pastime with him in the hospital. तो मैं तभी उस टाइम में पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो गया था मुझे कि ये है ना इनको कुछ भी नहीं होगा और ये अपनी जो अवस्था से जस्ट बाहर आएंगे और ये जस्ट एक लीला है और लीला जो है ना जस्ट दिखा रहे हैं, हम सबके लिए लीला कर रहे हैं वो उनके बद्ध जीवों के लिए। बस ये मैं पूरा पूर्ण रूप से निश्चित था बाहर आएंगे और ये वापस हम सबके लिए उदाहरण बनेंगे ये। Because every time when the doctor would come at 10:30, the registrar, he would come, I would always have a talk with him. And then I would ask him, Doctor, what is the prognosis? Prognosis means what is the future of this patient? Will he come out of it? Will he improve? Will he die? Will he, like that. That's called prognosis. तो इसलिए जब भी वहां पे जब डॉक्टर आते तो मैं हमेशा उनका पूछता था कि ये जो है मरीज है जो इनका जो क्या मतलब भविष्य है, क्या ये आएंगे वापस अपनी अवस्था से ऊपर उठ जाएंगे या चले जाएंगे, क्या होगा इनका, इनका क्या भविष्य है, क्योंकि उसको प्रोग्नोसिस इंग्लिश में बोलते हैं। तो वो प्रोग्नोसिस मैं उनसे पूछता था ये डॉक्टरों से। And you would always say, no, 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 no. Well, that's the material world. That's the material world. Always no, pessimistic. तो लेकिन जितने भी डॉक्टर थे वो हमेशा ऐसे गर्दन हिलाते रहते थे, नहीं नहीं। मतलब ये है ना इतना निराशावादी, जो भौतिक जगत है निराशावादियों से भरा पड़ा है। But in my heart, I could feel that Srila Jayapataka Maharaj was communicating with me. And I took that signal and, always, talking to him. And I told him a beautiful pastime, which will really touch your hearts, which very few people know about. Because at the time when Srila Jayapataka Maharaj was in hospital, Srila Radhanath Swami Maharaj was in Vrindavan doing a yatra with about, 8,000 disciples. तो मुझे याद है कि जब श्री जयप्रकाश महाराज साहब जब मैं अस्पताल में था उस टाइम में, तो मैंने उनको एक और चीज उनको बताई, क्योंकि मुझे याद है उस टाइम में जो राधानंद महाराज है वो अपने 8,000 शिष्यों के साथ में वृंदावन में यात्रा पे गए हुए थे। तो मैं उनको ये उनकी सूचना दी थी उनको, महाराज को भी इसकी। And I was told that Srila Radhanath Swami Maharaj, he was always at every moment of the yatra, always concerned about the welfare of Srila Jayapataka Swami Maharaj. तो मुझे याद है कि वहां से बार बार मुझे ये संदेश आ रहा था कि जो भले वो यात्रा में वहां पे, लेकिन वो हर क्षण जो श्री जयप्रकाश महाराज का जो से बहुत ज्यादा उनके बारे में उनको बस उनके बारे में याद करके जितना जल्दी हो सके हे भगवान उसको है ना ठीक कर दो और वापस अपने सेवा में लगाओ, ऐसा करके उनका यही भाव था उनका, हमेशा उठते बैठते। So there was a procedure that Dr. Suraj, that the Shamlal Prabhu would go and then check all the various vital signs of Srila Jayapataka Maharaj and talk with the doctors there, and then he would phone up Vrindavan and give a report to Dr. Alva, Siddharam Alva. तो वहां पे उस टाइम में जो एक डॉक्टर थे जो हमेशा है ना जो क्या क्या चीज वहां पे हो रहा है वो डॉक्टर अलवा को है ना वो पूरी जितनी भी जो सूचना पूरा संदेश भेजते थे उनकी अवस्था के बारे में कि कब किस अवस्था में क्या है, उनका पूरा जो है रिपोर्ट है ना डॉक्टर अलवा को भेजी जाती थी। And then Dr. Alva would explain that to Srila Radhanath Swami Maharaj. और जो डॉक्टर अलवा है ना वो फिर है ना राधानंद महाराज को पूरा जो परिस्थिति का पूरा मुआयना उनको समझाते थे, ये परिस्थिति कैसे क्या है पूरा उनको समझाते थे वो। So Maharaj was in Fogel Ashram and he was always chanting his rounds and he was so concerned
The other devotees were, in Vrindavan with the yatra and all, but Maharaj was always so focused on, the welfare of Srila Jayapataka Maharaj, and always asking the devotees to pray for him and talking about his glories and, informing the devotees what is the condition of Srila Jayapataka Maharaj in Mumbai Hinduja Hospital. तो श्री राधानंद महाराज तो इतने ज्यादा मतलब उनका इतना ज्यादा उनको मतलब उनके बारे में इतना ज्यादा ख्याल रहने लगा कि वो उठते बैठते हमेशा ना सब भक्तों को बोलते रहते, उनके लिए प्लीज प्रार्थना करते रहिए और उनके लिए मतलब उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए जल्दी स्वस्थ हो जाए वो। तो बस उनका यही उठते बैठते उनको बस एक ही चिंता रहती थी कि जल्दी से महाराज ठीक हो जाए और वापस आ जाए हमारे बीच में, बस यही उनको चिंता रहती, उठते बैठते बस। Daksh, take your phone, it's ringing. So now listen to this most intimate part of how Krishna showed me that Srila Jayapataka Maharaj is fully conscious, fully Krishna conscious. I told him that Maharaj, Srila Radhanath Maharaj is so concerned about you. He's in his room, he's chanting, he's always inquiring about you. तो इसलिए मैं अभी ये बहुत ज्यादा जो है ना जो महत्वपूर्ण है जो चीज, जो क्योंकि मैं वहां पे उपस्थित था तो मैं बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए। तो वहां पे मैं जब राधानंद महाराज के बार सब आता संदेश की हम प्रार्थना कर रही है कि तो मैं महाराज को बताया कि महाराज जो राधानंद महाराज हैं वो वृंदावन में है और बहुत सारे भक्त हैं वो भी वृंदावन में है, उनके साथ में उनके शिष्य और सब है सिर्फ आपके बारे में ही पूछ रहे हैं बार और आपके बारे में ही प्रार्थनाएं की जा रही है, ऐसे मैंने बताया जयप्रभु महाराज को। And then you know what happened? From his right eye, one tear fell down and landed on the pillow. From his right eye, one tear slit along his face, and then it fell on the pillow when he heard what I was saying. तो जब मैंने उनको ऐसा बोला कि उनके जो सीधे हाथ की जो आंख है, सीधी आंख से है ना एक अश्रु निकला, एक अश्रु है ना उनके जो उनका जो पिल्लो है जो वो पिल्लो के ऊपर जाके वो गिरा जो। But you see, I want to tell you that the love that Vaishnavas have for one another is not of this material world. It is beyond this body. It has nothing to do with a coma situation. It has nothing to do with the condition of the mind. It's a pure, loving, heart-to-heart relationship, which is transcendental. तो इसलिए मैं ये इससे मैं आपको बता सकता हूँ, इससे मैं आपको साबित करना चाहता हूँ ये घटना से कि ये जो वैष्णव का आपस का जो प्रेम होता है वो भौतिक स्तर पे नहीं होता है, वो आध्यात्मिक स्तर पे होता है और उनका आत्मा से आत्मा का प्रेम होता है, अपने हृदय से हृदय का प्रेम होता है ना। उनके आप ये भौतिक जगत के प्रेम से बिल्कुल तुलना कर ही नहीं सकते कभी आप। ये जो आध्यात्मिक प्रेम है वैष्णव के बीच का वो है ना बहुत ही उच्च स्तर का माना जाता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक स्तर पे होता है, गोलोक वृंदावन के स्तर पे है इनका जो आपस का जो प्रेम है, ये इसको बोलते हैं असली जो प्रेम है वैष्णव के बीच का। So that was so touching to me. So, the year when they had these bomb blasts, these terrorists attacked, VT station at Chhatrapati Shivaji Terminus, they attacked Taj Hotel, Gateway of India, and they attacked the, Trident, Oberoi Trident, and then this Jewish house, they attacked, these 10 terrorists and all. That day, there was a Vyasa Puja unofficial for Maharaj at Srinath's house. तो मुझे याद है उस टाइम में जब ये आक्रमण हुआ था जब 10 जो आतंकवादी आ गए थे, इधर घुस गए थे और जब जो इस ओबेराय वगैरह में जो होटलें थी वगैरह और वीटी स्टेशन पे ऐसे बहुत सारे जो महत्वपूर्ण ठिकानों पर उन्होंने गोलियां बरसाई थी, उन्होंने कई लोगों को मारा था उन्होंने आतंकवादियों ने। तो उस टाइम में जो देखा जाए तो ऐसे ही मतलब अघोषित जो व्यास पूजा थी महाराज की उस दिन। किनके घर पे बोल रहे हैं प्रभु, किनके घर पे? That was I think 13th of November or something, or 26th of November. I don't know which year it was. It was 26th of November or something like that. 26 नवंबर को शायद उस दिन व्यास पूजा मनाई जाती थी किसी के। These terrorists always attack on 13th or 26th. They always attack. If you study. तो इसलिए आप देखेंगे जितने भी जो आतंकवादी हैं तो 13 को या 26 तारीख को ऐसा ही उनका आक्रमण होता है ये। So when I told this pastime that how, I was telling Srila Jayapataka Maharaj about, how much the devotees love him, especially his godbrother, Srila Radhanath Swami Maharaj, and how that tear fell.
you won't believe it, all the devotees became breathless in the Vyasa Puja. They all became breathless. इसलिए जो मैंने जब उनको ये बताया कि जब ये जो उनकी लीला मैंने बताई, जब वहां पे जब व्यास पूजा समारोह में, तो जितने भक्तों ने जब सुना तो वो सब एकदम जो भक्त एकदम भाव विभोर हो गए, सब एकदम बहुत ज्यादा एकदम. Because I made a statement that I wish I could have caught that one teardrop of Srila Jayapataka Maharaj and preserved it. Right? आप translate करो, अनुवाद करो. तो क्योंकि मैं उनको ये बता रहा था कि ये मैं एक्चुअली ये जो एक जो क्षण था उसको मैंने मेरा दुर्भाग्य कहिए जो भी कहिए उसको मैंने एक्चुअली मैं उसको मेरा यही था इच्छा थी कि मैं उसको वो जो आंसू नीचे पिलो के ऊपर गिरे हैं उनके तो उससे पहले ही मैं चाहता था कि उसको अपने पास में संभाल के रखता था मैं उसको, तो अच्छा रहता मेरे लिए, बहुत सही रहता था वो. Then I would have taken that teardrop and gone to some kund in Vrindavan and filled it up with Yamuna Jal and added that tear, and I'd be damn sure that anyone who took bath in that would get pure love for the Vaishnavas and for Krishna. So powerful that drop. It was so transcendental and it was so mystical the way it fell and went on the pillow. Unfortunately, I couldn't catch it. तो मैंने लेकिन ये क्योंकि मेरी थी, मैं सोचा था कि अगर वो मिल जाता रहा आंसू का एक बूंद अगर, तो मैंने उसको ले जाके मैं कुंड में जाके उससे पानी लेता था और कुंड को भर के उसमें रखता रहा. मैं ये सिर्फ साबित करना चाहता था कि है ना वो जो है ना वो जल से जो भी कोई नहाएगा वो जल से तो उसका पूर्ण सुनिश्चित है ये कि वो उसको भी वैष्णव के प्रति प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी. You see, so we have come to this chapter. Before I conclude, now we are talking about Krishna being the cause of all causes. And in the beginning of this chapter, this 5th chapter, Prabhupada says very clearly, Tad vidhi pradipatena pariprashnena sevaya. You have to approach a bona fide guru. You have to serve him. And then color, I don't know what the question how you can serve him better. तो इसलिए जैसे यहाँ पे भी जो श्रील प्रभुपाद से तद्विन सेवा ऐसे लिखा है उन्होंने, तो यहाँ पे भागवतम में उसका दिया है कि आपको भी एक जो प्रमाणिक गुरु के है ना, हरि बोल हरे कृष्ण, कृपया करके उसको वो करिए. तो इतने में तो I don't know which you speak. गुरु महाराज प्रमाणिक गुरु के पास जाओ, गुरु महाराज की जाके सेवा करो और सेवा करने में उसको प्रसन्नचित करके फिर उसको है ना जिज्ञासा करो उसके साथ में. ये सब लिखा है प्रभुपाद ने भी. So Prabhupada says that in the beginning of this chapter, and he very clearly says that this is an imaginary form of the Lord, this universal form. It is आरंभ में ये अध्याय के आरंभ में श्रील प्रभुपाद ने बता दिया है कि ये जो इसका जो विश्व रूप है जो भगवान का, ये देखा जाए काल्पनिक है, कोई आध्यात्मिक जगत में कहीं होता नहीं. ये फॉर्म जो रूप है इनका विश्व रूप, ये जस्ट एक कल्पना है, काल्पनिक है. It is just for the neophytes, the Mayavadis, all these people who will never ever get a darshan of the transcendental form of the Lord, so that they can actually, have something comparative and therefore get some idea of the Lord, because they are so impersonal that they'll never get a chance to see the form of the Lord. क्योंकि जो मायावादी हैं, ये सब जितने भी जो लोग हैं जो भगवान के रूप को नहीं मानते हैं, उनके लिए तो संभव ही नहीं है कि भगवान के रूप का दर्शन करना. तो इसलिए उनके लिए एक्चुअली ये विश्व रूप दिखाया है ताकि कम से कम थोड़ी तुलना हो सके उनको, उनके थोड़ा बहुत तो उसके दिमाग में जाए कि हाँ भगवान का भी कुछ रूप है, थोड़ा बहुत समझ आया उसको. Yes, and as devotees, you see the devotees who go all around the world preaching, just like Srila Jayapataka Maharaj, he is the most important passenger for British Airways because the number of miles he's traveled on British Airways, it's history. तो बोलते हैं कि जो जयप्रकाश महाराज ने जो जैसा प्रचार किया है पूरे विश्व में घूम के, तो उसमें जो ब्रिटिश एयरवेज थी, जो ब्रिटिश की जो है एयरलाइन है, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण एक्चुअली पैसेंजर माने जाते, बहुत महत्वपूर्ण यात्री थे ये, क्योंकि इन्होंने जितना यात्रा की है ब्रिटिश एयरवेज से, वो किसी भी कोई व्यक्ति कोई भी यात्री ने इतना उन्होंने यात्रा नहीं की है. तो ये उनके लिए बहुत विशेष उनके लिए यात्री माने जाते थे ब्रिटिश एयरवेज के लिए महाराज. And Maharaj, you see, he is very popular with the immigration and everyone, because whenever he comes back from abroad and all, he has these packets of dry fruits
He just takes palmfuls and gives to all these officers. They get so excited when he comes back to India. This is what Mukunda Maharaj told me. This is not my speculation. Mukunda Maharaj told me this. Yeah. तो महाराज लेकिन जितने भी यहाँ पे जो आप देखेंगे जो अथॉरिटीज यहाँ पे जो भी है, जो पासपोर्ट ऑफिसर वगैरह हैं, जो वहाँ पे जो प्रवासी मतलब जो इमिग्रेशन में जितने भी ऑफिसर वहाँ बैठते हैं, तो महाराज जब आते थे तो हमेशा हाथ में मुट्ठी में भरी रहते थे हमारे प्रसाद के लिए, और सब प्रसाद सबको बांटते, जितने भी ऑफिसर थे सबको, जितने भी वहाँ एयरपोर्ट पे लोग सबको देते थे। तो वो जितने ज्यादा मतलब भाव विभोर हो जाते, बहुत आनंदित हो जाते थे सब लोग, तो वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। तो ये मैंने ये मुकुंद महाराज से सुना है, मैंने कोई अपने मन से नहीं बोल रहा आपको, कि ये सब बहुत प्रसिद्ध थे वहाँ पे, सब इमिग्रेशन ऑफिसर के बीच में बहुत प्रसिद्ध थे महाराज वहाँ पे, एयरपोर्ट सब जानते थे, खुश हो जाते थे, अरे आए हैं वो प्रसाद मिलेगा। So I have not got infected by the COVID virus in a big way. The COVID virus has not been able to get the better of me. But this Srila Jayapataka Maharaj Prasad distribution virus has got the better of me. तो लेकिन मेरे को तो कोविड कैसे इतना हमें कुछ हुआ नहीं, मुझे कोविड ने के मेरे ऊपर असर कुछ कर नहीं पाया, लेकिन जो प्रसाद का ये जो वायरस है महाराज के प्रसाद का, उसने जरूर मेरे को प्रभावित किया बहुत ज्यादा। Yeah, so that's why I always take Srila Jayapataka Maharaj as my role model for distributing prasad and going around and giving to everyone and all. You see, that's so important actually. इसलिए मैं इनसे ये इतने ज्यादा प्रेरित हो गया उनका ये प्रसाद जो वितरण से, तो मैं अभी उनके लिए मेरे लिए एक रोल मॉडल है, कि मतलब एक लिए बहुत ही एक अच्छा उदाहरण रहते हैं हमारे, हमेशा मेरी आंखों के सामने रहेंगे कि कैसे वो प्रसाद वितरण कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने भी उनसे प्रेरणा लेके मैं भी अपने साथ में भी प्रसाद रखता हूँ, और जहाँ पे भी जाता हूँ सबको वितरित करता हूँ मैं भी प्रसाद। Yes, so a few verses before this, there's a talk about the Brahmanas being the head, and then the Kshatriyas being the arms, and then the Vaishyas being the stomach, and the Shudras being the legs. Yes, we also have that Varnashrama Dharma system. We are trying to have it in ISKCON, but we are the Daivi Varnashrama. तो इसलिए जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो भगवान का जो सिर है वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण निकले उसमें से, और जो क्षत्रिय है वो उसके भुजाओं में से, और जो पेट जो उदर है उदर में से वैश्य, और जो इनकी जो टांगे हैं टांगे में शूद्र है। तो ऐसा करके देखा जाए तो ये वर्णाश्रम जो है ये पद्धति है, ये एक्चुअली स्थापित करने के लिए कहा गया है। तो हम भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महासभा में इसको बोलते देवी वर्णाश्रम, ये देवी वर्णाश्रम इसको भी स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। So we are this Panch Purushartha. We don't want Dharma, Artha, Kama, Moksha. We go straight to Prema Paramatma. That's what Lord Chaitanya told us to do. Similarly, in the Varnashrama Dharma system, we just aim to be the servant of the servant. Gopi Bhartu Padakam, Das, Das. And we have to cultivate this in this lifetime, otherwise no going back to Godhead. Even if you go back to Godhead, you'll be wasting your time there. You'll have all your complaints and protests and all, everything. So train here. This is Goloka Vrindavan. This is the spiritual world. This is eternal. But we have to practice with each other these loving relationships to realize it. तो लेकिन हमें यहाँ पे ही जो है ना, यही एक देखा जाए तो हमें ये जो भाव है, जैसे देवी वर्णाश्रम में हम डायरेक्ट मतलब हम दास बनना चाहते हैं, ठीक है ना। हम लोग तो का धर्म अर्थ काम मोक्ष उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हम डायरेक्ट। तो वैसे ही जो हमको भी यहाँ पे जो हमारा जो ISKCON जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसमें जो हम जो भक्तों के बीच में हमको प्रेम का आदान प्रदान करना, अच्छे संबंध बना के रखना है, और यही सोचना है कि यही गोलोक वृंदावन है, यहीं पे जो कोई अलग नहीं गोलोक वृंदावन, यही गोलोक वृंदावन हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण संघ। इसमें सब भक्तों के साथ में मिल के जुल के और अच्छे ढंग से प्रेम से रहना है, और प्रेम का आदान प्रदान करते रहना है, और सेवा करते रहने का। So all these preaching yatras in the Gulf are very, very crucial yatras and very, very pleasing to Lord Chaitanya, especially Srila Prabhupada. इससे जितने भी मध्य पूर्व देश में देखा जाए तो जो यात्राएं जितनी भी है वो सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा हो रहा है वहाँ प्रचार, और ये चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न है इससे यात्राओं से, और विशेषकर तो श्रील प्रभुपाद बहुत ज्यादा प्रसन्न है, इतना अच्छा वहाँ प्रचार हुआ है। So Prabhupada said, I take the dust of the lotus feet of those devotees who are preaching in these Muslim countries. तो श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि जो मुस्लिम जो देशों में जो प्रचार करते हैं, मैं उनके चरणों की धूल अपने सर पे
लगाता हूँ। So try to understand, Lord Chaitanya came at a time when there was Muslim rule. So there is a whole leela on this. You see. इवन जो चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो उस टाइम सामने भी मुस्लिम मुगल साम्राज्य होता था, मुगल लोग शासन करते थे उस टाइम में, ये उनकी लीला थी ये भी। And how did I become a Hare Krishna devotee after being a Christian? Because previously I must have been in the Vedic culture, but then due to some bad habits and all that thing, somewhere down the line, some of our generations, they became Christians. They converted because of all this, this Ved Bhav, this making all these kind of distinctions on the basis of body and birth, which is condemned by the Gita. It is Janma Karma Vibhagasha. It is not Guna Karma Vibhagasha. It is not Janma Karma Vibhagasha. You see, in the fourth chapter of the Bhagavad Gita, Chatur Varne Maya Shishtam Guna Karma. It's not Janma Karma, which is being done today in India, even now. Janma. इसलिए जैसे कि बताया है कि हम क्रिश्चियन फैमिली में भी जब परिवार में रहते हुए भी हम लोगों को इसमें कैसे आया, इसका मतलब है पिछले जन्म में हम लोग तो हम वैदिक संस्कृति को ही हम पालन कर रहे थे। तो जैसे कि इसलिए जो हमने ये जन्म से कोई मतलब नहीं है, ये इसको साबित करता है। जैसे कृष्ण गुण कर्म विभागश, तो जन्म से नहीं है, अपने आपके जो गुण है आपके, उससे गुणों से उसका विभाजन किया, गुणों में विभाजन किया, गुणों के आधार पे, न कि जन्म के आधार पे। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज हमको समझने की है। So my request to all the devotees is, don't get caught up on mundane things. Simply take care of your health, build proper relationships with each other, be in this mood of trying to assist each other, sacrifice ourselves for the welfare of others, especially to start with the devotees. Take care of those who are ailing, take care of those who are aging. Focus on that. That is actually the ecstasy that Ishwara Puri felt when he was taking care of his Guru Maharaj Srila Madhavendra Puri. And therefore he got the greatest blessings to be the Guru of the Supreme Personality of Godhead. इसलिए मैं सब भक्तों से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो भौतिकता जो स्तर से हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना, भौतिकता जो उपलब्धियां हैं, भौतिक उपलब्धियां, उसकी तरफ ध्यान में देके हम लोग आपस में सब भक्तों के एक दूसरे की हम सहायता करें, भक्तों को ऊपर उठाएं, भक्ति में जिनको जरूरत है हमारी, उनकी सेवा की, उनको जाके सेवा दें अपनी, एवं जिसको जो भी कुछ बीमार है या कुछ है उनकी जाके सहायता करें, हम उनके बीमारी से बाहर निकालें उनको। और यही हमें एक्चुअली देखा जाए तो असली यही हमें जो काम आएगा, और यही हमारे लिए ये जैसा चैतन्य महाप्रभु ने बताया, ये जो मेन जो हमारी जो आनंद है, जो सचमुच का जो सच्चा आनंद इसी में है। और आप इसको अनुभव ही करेंगे, आप जब ऐसा करेंगे तो भक्तों का केयर करेंगे, भक्तों की आप देखरेख करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, प्रेम के संबंध बनाएंगे, तो आपको बहुत ही ज्यादा आनंद विभोर हो जाएंगे आप भी। So Prabhupada said, you are not capable of seeing the results of your preaching. He told his disciples, in the country. But if you had eyes, you would see what miracles are happening, just like Srila Bhakti Tirtha Maharaj. He says in Bhakti Vedanta Hospital, every few seconds I see a miracle happening. That means the heart is getting transformed. तो इसलिए जो शिल प्रभुपाद ने बोला है कि जैसे उनके शिष्यों, उन्होंने जैसे शिल भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज वो भी बोल के गए, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में हर क्षण में मैं चमत्कार देखता हूँ, कैसे लोगों का हृदय का परिवर्तन हो रहा है वहां पे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में जो भी आते हैं वहां। So miracles are happening every day, but we should be focused. We should be focused in the mood of the servant of the servant. Then everything will be revealed into us within the heart. And then we'll understand that where the devotees are there with loving relationships, chanting the holy names of the Lord, preaching, sharing with each other, Mat Chitta Mat Gata Prana Bodhavyantas Parampara. That is one of the main shlokas of the Bhagavad Gita, Chaturshloki Bhagavad Gita. तो इसलिए जो है ना, जैसे चतुश्लोकी भगवद गीता का भी श्लोक, तो वैसे तो हम लोग जब भक्तों की सेवा करेंगे हम और एक दूसरे के जो विनिमय, प्रेम का आदान प्रदान, प्रेम का विनिमय करेंगे एक दूसरे को, और प्यार से हम उठेंगे बैठेंगे और एक दूसरे की हम सेवा करेंगे, दास बनने का प्रयास करेंगे, तो जितने भी जो गोलोकों की लीला है वो स्वतः ही प्रकट हो गया हमारे हृदय में, और हम पूरा आनंद में, भरपूर आनंद में के सागर में डूब जाएंगे हम लोग। तो ये यहीं पे हमको है ना
गोलोक वृंदावन का जो अनुभव यहीं पे होने लगेगा। हम पर हम भक्तों का देख रेख करेंगे, वैष्णव की सेवा करेंगे, वैष्णव के प्रेम करेंगे। Yeah. So more important than cow protection is the protection of the ladies, the Matajis, then the protection of those who are aging or aged, then the protection of our children who need to be given proper sanskars so that they don't go astray. They should not be neglected. They should be taken care of. And then those who have dedicated their life as full-time preachers, they should be very well protected, very much loved, very much inspired. And they should be appreciated. So this is what you call the spiritual world. तो देखा जाए तो जैसे हम गायों की चलो ठीक है देख रेख करना तो अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम है ना जो भक्तों का है ना ज्यादा देख रेख करें, खासकर उन भक्तों के जो बीमार हैं या फिर बूढ़े हो गए, खासकर जो महिलाएं हैं, महिलाओं की हमें उनको हम संभाल करें, हम उनकी देख रेख करें, बच्चों को देखें कि उनको सही संस्कार मिले हैं। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी हम जो इस्कॉन में जो हमारा परिवार है ये हमारे उसमें उसकी हम सबकी देख रेख करें, उनकी सेवा करें, उनको प्रेम दें हम लोग, उनको जहाँ जरूरत है हमारी सेवा की, जहाँ हमारी सहायता की जरूरत है वहाँ पे उनकी जाके सहायता करें। तो ये असली हमारा जो मेन जो उद्देश्य हमारा यही होना चाहिए, जो गोलोक वृंदावन का भाव होता है वही भाव हमारा होना चाहिए। Yes, so that is my limited explanation to this verse. Verse 39 of the 5th chapter of the 2nd canto of the Srimad Bhagavatam. तो इसलिए जो ये है ना जो बहुत ही सीमित हमारा जो मैंने आपको इसको समझाया, जितनी मेरी समझ थी सीमित समझ वो आपके साथ मैंने बांटा आज इस भागवतम के श्लोक का। Thank you very much. Does anyone have any comments? Please, you are most welcome. Or any questions? Yes, Prabhu, yes. Now see, some now as you say that the preaching, who are preaching now, the thing is there now as per our the ISKCON the system is there that who are now online this preaching is going on. So now online preaching means that different cities preaching is going on. Some devotees they are preaching, so many devotees. So some devotee means of course who are connected to some particular temple. So naturally the temple they wanted that they to temple will take care of them. Then will they serve that temple only. Not they will say what you are doing the preaching that is for some other places. You preach here, you do something for the temple. Then only we'll care for you. They straightway they say that we'll care about you. Then will you serve the temple? You do this thing. So now the people who are already engaged in preaching since a few years, they are already connected with the devotee in different cities. So they are in big this thing. They are totally now separated because temple is not caring about them. He's telling you are not what is your contribution to the temple, our temple, what your fund you are bringing. So that is the thing. So because the people who are staying there, of course they are staying which are in those cities some ISKCON temple, they will contribute there only. So in that case, what will be this thing? A solution. What is the solution for this problem? That the preachers who are not able to contribute to it, of course they cannot because they are already since few years they were in Middle East and they were preaching online and then they are online. They are cultivating them, but that is of course there's no contribution to the. I am in the meeting, bro. I am in the meeting. I will call you. Okay. Okay. After half an hour. After half an hour. Okay. After. Yes, bro. Okay, okay. I have not told him anything to do. Anyhow, I will half an hour. You tell him wait. I will come there. Okay, okay, okay. Yes. So, so that is the thing. And now that how the situation that we are going to deal with this one. Okay, now I went through all these experiences when my wife had cancer in 1988. She had brain cancer. तो प्रभु बता रहे हैं कि जब मैं उनकी पत्नी को ब्रेन कैंसर हो गया था, तो मस्तिष्क का जो कैंसर, तो उस समय में है ना ये है ना एक्चुअली जो हुआ था, ये जो अनुभव इनको जो हुआ था उसके बारे में अभी थोड़ा बांटेंगे हमारे साथ में. Yes. So I was not earning. I was a full-time preacher. We were staying in Juhu, and then we had to move out of Juhu, and shortly after that my wife
in 1988 we discovered that she had cancer, this brain cancer. तो हम लोग Yes, जू में हम रहते थे, जू में इस टाइम में तो हमें जू से बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि जब हमें मालूम पड़ा कि सन 88 में कि उनको कैंसर होगा, हमारी पत्नी को मस्तिष्क का, तो हमें बाहर निकलना पड़ा जू से। कैंसर तो बाद में आ गया, but 87 due to some different disagreements, the disciples of Kirtan Maharaj had to leave the Jew temple. Yeah. तो लेकिन कैंसर तो फिर बाद में हुआ, लेकिन कुछ हमारा जो आपस में जो सहमतियां नहीं थी कुछ मुद्दों के ऊपर, उसके कारण मुझे हमें निकलना पड़ा वहां से। So then there was no one to help me, so I had to go to friends. I had to go to friends to ask them for money to operate, my wife. तो मेरे को उस टाइम में काफी मैं बड़ी समस्या में आ गया, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, और मेरे जो जहाँ पे मैं रहता था वहां पे मेरी पहचान जरूर, बाकी जो बाहर जो भौतिकतावादी जो मित्र थे उनके पास जाना पड़ा मुझे, अपनी पत्नी का इलाज करने के लिए पैसा मांगना पड़ा। So then they were saying that ISKCON is not paying. So मैंने उसको downplay कर दिया. I said, well, you see, I'm just coming to you. You're my good friend, but actually I could not tell them frankly that ISKCON will not give a single paisa for that. तो वो मेरे को बार बार बोलते थे, मेरे मित्र, आप ISKCON की इतनी सेवा की तो क्या वो आपके लिए ये नहीं करेंगे, आपको पैसा नहीं देंगे इलाज के लिए? तो मैंने उनको कुछ ऐसा बोला नहीं कि क्या है, तो बस यही मैंने उनको बोला कि नहीं, क्योंकि आप मेरे अच्छे मित्र, मैं आपके पास आया हूँ, और ऐसा मैंने कुछ उनको बताया नहीं कि नहीं ISKCON तो हमें वो कर देगा, ऐसा नहीं देगा, कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं। मैंने बोला नहीं, आप अच्छे मित्र थे, मैं आपके पास आया। So that's why all these friends, they were not devotees of ISKCON. We were very good friends with each other. They were giving donations for programs and various other things and all that thing. So they immediately took out money and they were giving, for medical expenditure. क्योंकि ये मेरे मित्र पहले बहुत, जब ISKCON के जब हमारे जो भी प्रोग्राम होते उसमें हमेशा दान देते थे, तो उन्होंने तुरंत मेरे को, फिर उन्होंने अब मेरे पत्नी के इलाज के लिए तुरंत पैसा निकाल के दे दिया था। So there is a saying that we are not human beings who are trying to be spiritual, but we are spiritual beings who are trying to be human. You understand? उसका अच्छी तरह से हाँ, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग है ना, एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग है ना, ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत अच्छे इंसान है और हम एक आध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, एक आध्यात्म के आदमी बनना चाहते हैं। नहीं, हम जो आध्यात्मिक आदमी को, पहले तो हमें एक अच्छा इंसान बनने का है, वो हम प्रयास कर रहे हैं और करने का है हमको, क्योंकि आध्यात्मिक आदमी को एक पहले अच्छा इंसान बनने का है ना, एक अच्छा जो इंसानियत होना बहुत आवश्यक है उसके लिए, ये कहना है। So that is why when Krishna, when his father-in-law was massacred by Shatadanva, Krishna was crying. When the sleeping sons of Draupadi were, Krishna was crying. So many instances, Abhimanyu, Krishna was crying because he could not see he could not bear to see his devotees crying. So Krishna was a perfect human being. Besides being the Supreme Personality of Godhead, he had all those qualities in him to cry along with those who are suffering. You are in Maya. You are not this body. This sun is, what is that? I think we have missed something. We have to get back here. Are we back online? Yes. Yeah. Okay. So yes. You see, so you see Krishna, that is why we need to study Krishna Leela, not just from a philosophical point of view, but from the emotional point of view. How? Please translate that. तो अभी जैसा कि कृष्णा का भी जब ससुर की जब हत्या की गई तो एकदम रोने लगे, अभिमन्यु की हत्या हुई, रोने लगे, 5 जो पांडव के पुत्र उनकी हत्या हुई, द्रौपदी के पुत्रों की, तो वो रोने लगे। तो उस टाइम में ऐसा नहीं बोला कृष्ण ने कि अरे तुम लोग क्या है, तुम्हारा पुत्र ये सब माया तो है, वो चला गया तो क्या फर्क पड़ता है उससे, तो वैसे हमारे सब जो रिश्ते नाते ये तो क्या है, भौतिक स्तर पे है, ये तो वो तो आत्मा थी, आत्मा थोड़ी मरी है, ऐसा कुछ नहीं। कोई आध्यात्म से उनको समझाने का प्रयास नहीं किया, वो भी रोने लगे। तो ये देखा जाए तो कृष्णा एकदम, देखा जाए तो सबसे ज्यादा पूर्ण एक मनुष्य है, इंसान है, पूर्ण इंसान, जो पूर्ण इंसान का एक जो व्यवहार होना चाहिए, उनमें इंसानियत होनी चाहिए, वो पहले उनमें भगवान तो बाद में है वो। तो वैसे ही जो भगवत गीता की भी जो हम जो
जो दर्शन शास्त्र है वो समझने या उनको लोगों को समझाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हम जो इंसानियत, एक अच्छा इंसान बने, इंसानियत दिखाएं अपने, हमारे हृदय में लोगों के प्रति प्रेम और इंसानियत होना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है पहले। Yeah, so therefore, if Krishna, when Bhishma was shooting arrows, Krishna's body did not bleed, or that so many things, that Krishna did. He never cried, he never stole butter, he never passed stool and urine and all. Then how could you love such a person? Because you can't go and love Vishnu, because he doesn't have those qualities of Krishna, those 4 qualities. So Krishna comes as a human being so that we can relate to him and love him. इसलिए जैसे अब जब महाभारत के युद्ध में तो हुआ था, जो भी जो फाइट कर रहे थे, तो उस टाइम में तो जो कृष्ण के जब के ऊपर तीर चलाया जा रहा था, भीष्म पितामह, तो उसमें से बोलते हैं चलो उसका खून नहीं निकला, उसका ये नहीं हुआ, उसका ऐसा नहीं हुआ, उसको कभी टॉयलेट बाथरूम नहीं आई। तो ऐसे जो चतुर्भुज जो विष्णु फॉर्म है उसको हम कैसे प्रेम कर सकते हैं? जब उसमें उससे हमारा जो शरीर उसके शरीर से अलग है, तो हम उसके साथ कैसे संबंध स्थापित कर सकते हैं? इसलिए कृष्णा को आना पड़ा दो फॉर्म में, और ताकि, क्योंकि कृष्णा जो 4 जो उनमें जो गुण है जो भगवान विष्णु में नहीं है, वो उनमें है। क्यों है वो? क्योंकि वो हम अपने शरीर की तुलना उनके साथ करके उनसे प्रेम का संबंध स्थापित कर सकते हैं, कुछ रिश्ते नाते से कर सकते, रिश्ते जो है उनके साथ स्थापित कर सकते हैं और उनसे प्रेम कर सकते हैं। आसान है हमारे लिए बनस्पत की भगवान विष्णु से प्रेम करने। So what I always say is, Krishna consciousness is not just thinking of Krishna. Krishna consciousness is seeing things from Krishna's point of view. That means if you go crying to Krishna, he will cry 100 times more than you if you are in trouble. तो इसलिए जो है ना, जैसे कृष्णा जब बोलते हैं, जब कोई समस्या ग्रस्त है तो हम कैसे उसका आंखों में आंसू आ जाते हैं कृष्ण, तो हम लोग उससे ज्यादा हमें आंसू आना चाहिए कृष्ण से ज्यादा। जब हम ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान को याद करते, नहीं, हम जब कोई मुसीबत कोई समस्या हो तो हम ज्यादा हमें आंसू आ जाना चाहिए हमारे। So if we just keep talking about scripture and quoting Shastra and all this thing and all, we become stone-hearted if we don't go into the emotional side of it. What was the Lord's state of mind at that time? Even at Srivas Angan, Srivas Thakur's son left. Lord Chaitanya did not know. The ladies were crying. Srivas said that if you disturb the Lord when he's in his ecstasy, I will commit suicide in the Ganges. तो देखा जाए तो यहाँ पे जो इवन बहुत सारे जो शास्त्रों में से हम सब बताएं लोगों को, और ये अलग अलग कोटेशन दे रहे हैं, हाँ ऐसा लिखा है उसमें, सारे हम शरीर नहीं आत्मा है, ये है वो है, सब बहुत सारी हम जो दर्शन शास्त्र की बड़ी बड़ी बातें करें, ये करें, लेकिन हम लोग अगर ये नहीं, हमारे हृदय में लोगों के प्रति जो है प्रेम है, करुणा नहीं है, यहाँ करुणा नहीं आता उनको दुख देख के, तो जैसे कि इसमें बता रहा है कि एक ऐसे जो है ना श्रीवास ठाकुर के चैतन्य महाप्रभु, जो श्रीवास ठाकुर जब बच्चे का जब बच्चा मर जाता, उनका बेटा, बड़ा बेटा है, जबकि वो मर जाता, तो जितने भी घर के होते हैं रोने लगती है और आवाज आने लगती है, तो वो एकदम श्रीवास बोलते हैं उनको, नहीं नहीं नहीं, आप रोने का नहीं, रोएंगे तो भगवान की जो आनंद है उसमें है ना विघ्न आएगा, और अगर आप उसका विघ्न आ गया, कुछ हुआ ऐसा, मैं तुरंत जाके अभी गंगा में मैं जाके मैंने आत्महत्या कर लूंगा, इसलिए कृपा करके चुप हो जाओ, अगर थोड़ा भी किसी ने रोया, थोड़ी भी आवाज की, तो मैं तुरंत जाके आत्महत्या कर लूंगा। So later on, Lord Chaitanya said, I'm not feeling the same ecstasy as I normally feel. What is the matter? Then finally someone said that Srivas Thakur's son has passed. Then Lord Chaitanya said, Srivas, you didn't tell me? Your son has passed away. You know how important it is. And you didn't tell me. Lord Chaitanya was, very upset. He was very emotional. Okay. तो इसके लिए जब चैतन्य महाप्रभु के जब उसका आनंद का अनुभूति नहीं हो रहा था, इतना जो आनंद विभोर होना जैसे उनके स्वभाव में था, जब नृत्य करते थे, जब कीर्तन करते थे, उस दिन को कुछ ऐसा कुछ आनंद विभोर नहीं हो पा रहे थे वो, उनको लगता अरे आज कैसा क्यों रहा, मुझे क्यों नहीं इतना आनंद में पूरा, मैं बहन क्यों नहीं जा रहा हूँ, आज बहुत मेरे को आनंद के सागर में डूब नहीं रहा हूँ मैं, क्या बात है, आज कुछ घर में कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ मुझे लगता है कुछ तो भी अशुभ घटना हुई है, तो वो है ना फिर पूछते हैं कि आज मेरे को क्यों ऐसा हो रहा है, कुछ तो हुआ ही, कोई अशुभ घटना हुई है क्या घर में, तो उन्होंने फिर बोला नहीं कुछ नहीं, कुछ तो छुपा रहे आप मुझसे, तो उन्हें बोला, फिर धीरे से उन्होंने बोला, हाँ मेरे जो बेटे का, अरे आपके बेटे का निधन हो गया है और आपने मुझे बताया नहीं है, अरे ये मेरे कीर्तन से ज्यादा, मेरे से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज आपने मेरे से छुपाई है, इसके लिए मेरे को है ना
आनंद ही नहीं आ रहा था इसके कारण। ये ऐसा कैसे हो सकता है, आप इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हैं आप? So Lord Chaitanya understood that Srivas was such an exalted devotee that he had sacrificed his sorrow. He did not tell, well, it's only Maya, doesn't matter, he'll take another birth or he's gone back to Godhead. So many things Lord Chaitanya could have said philosophically, you're not this body, Srivas, don't be attached. No. The Lord was totally emotional that Srivas had not told him, and he was feeling great pain and distress that Srivas Thakur's son had left his body. Because even the devotees' relatives are very, very dear to the Lord. तो यहाँ पे देखा जाए तो जो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बहुत ही आसानी से उनको बोल सकते थे, अरे आप, वो तो शरीर नहीं है, आप तो, वो भी तो आत्मा है, आप भी आत्मा है, तो वो तो गोलोक वृंदावन चला गया, वो तो उसका तो मोक्ष हो गया, या उसका जो भी है वैकुंठ लोक चला गया। ऐसा उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने उसको बोला नहीं, ये है ना, मुझे मतलब वो भी, उनको भी आंखों में ऐसे आंसू आ गए, वो भी उनको उनसे सहानुभूति होने लगी, और वो बोले कि नहीं, ये आप ऐसा कठोर दिल कैसे हो सकते हैं, आप इतना पत्थर दिल कैसे हो जाते हैं कि आपका पुत्र मर गया और आपने मेरे को नहीं बताया, और आप आंखों में आंसू, आप रोए नहीं, ये कैसे, ऐसे कैसे हो गया? तो वो भी, उनको भी, मतलब चैतन्य महाप्रभु को भी इवन लगता है कि इस समय में हमें ये दर्शन शास्त्र की बातें नहीं करके हम उसके प्रति में, हमें सहानुभूति के प्रति हमें प्रेम का आदान प्रदान करना है, और उसको जो उसका जो दुख है, वो उसको मालूम भी था कि इनका ये बहुत हाई लेवल के भक्त है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं बोला, आप तो हाई लेवल के भक्त हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। नहीं, मुझे बहुत दुख हुआ और मैं रियली दुखी हो गया, इसलिए मेरे को आनंद नहीं आ रहा था, और मुझे बहुत मैं आपके दुख में मैं शामिल हूँ, ऐसा करके बोला उन्होंने। So 50 years we have opened so many centers, 700 centers odd. We have distributed, over 500 million pieces of literature. But I always say now for the next 50 years, we have to build up our infrastructure. Otherwise, if we don't build up our infrastructure, we will lose a lot of nice devotees. Not because they want to leave ISKCON, but because, they are fall into such a situation where we don't have an infrastructure actually to protect them and make them feel that, they are part of a huge family. So when they are leaving for the spiritual world, or wherever the Lord decides to take them, Guru and Krishna, let them leave and say that, yes, I've never had a family like this before. So this is a big challenge to all of us, and I'm sure it would be Prabhupada's desire. Because he said, only 50% of my work is done, 50% is still remaining. इसलिए हमने पिछले जो 50 सालों में देखा, 700 जो हम केंद्र खोले गए हैं, कई लाखों हमने जो साहित्य है हमारा, प्रभुपाद के जो पुस्तक है उनका वितरण किया है, हमने बहुत कुछ किया है, हमने बहुत सारे भक्त भी बने हैं, लेकिन हमारा जो भक्तों के प्रति जो आपका हम जो देख रेख भक्तों की करना है, उनकी संभाल करना है, उनको संभालना है हमको। और कोई अगर समस्या में, ऐसा नहीं कि वो लोग है ना छोड़ना चाहते, ISKCON छोड़ के जाना, नहीं, उनकी परिस्थितियां ऐसी आ जाती कि उनको है ना, क्योंकि कोई संभालने वाला नहीं है, इसलिए वो परिस्थिति के कारण वो टूट जाते हैं या उनको चले जाते हैं, भक्त से दूर हो जाते हैं वो। तो हमें ऐसा नहीं, हम लोगों का अभी 50 साल, अगले 50 साल में पूरा ऐसा, मतलब ISKCON में ऐसा प्रबंध करना है, ऐसा प्रबंध जमाना है, इधर ऐसी व्यवस्था करना है, उस व्यवस्था के अंतर्गत सभी भक्त एक दूसरे के प्रति जो आपस में प्रेम करें, एक दूसरे की देखरेख करें, एक दूसरे को संभालें, एक दूसरे को ऊपर उठाएं, और जब वो जाने लगे इस गोलोक वृंदावन में, तब वो ऐसा लगे कि मैं इतना बढ़िया परिवार से मैं बिछड़ रहा हूँ, उसको इवन ये जो गोलोक वृंदावन की आनंद भी उसके सामने फीका पड़ने लगे, उसको लगे यहाँ पे ज्यादा आनंद था, इतना बढ़िया परिवार से मैं जुड़ा, इतना आनंद में था मैं, ऐसा वो महसूस करते हुए जाना चाहिए। Lord Chaitanya chastised Sanatana Goswami because he wanted to take his life. Prabhupada chastised his disciples when they did not take care of his health. And what was the reason? Because your body is the property of the spiritual master. So what right do you have to use someone else's property? You are a thief. It is my property, your body. And I will use your body to do wonders, he told Sanatana Goswami, because your body belongs to me, Sanatana, not to you. तो चैतन्य महाप्रभु इवन जो कुछ भक्त थे, उनके जो पार्षद थे, वो आत्महत्या करना चाहते थे, तो उन्होंने उनको बोला, नहीं, ये शरीर तो मेरा है, और उनको डांटा फटकारा उनको कि आप, ये मेरा शरीर मेरी अमानत है, मेरी सेवा के लिए, आप कैसे उसको आप ले सकते हो, आपको क्या अधिकार है। वैसे श्रील प्रभुपाद भी जो कुछ उनके जब शिष्य बीमार अपने हो जाते थे, उनका अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते थे, तो बहुत उनको डांटते थे,
बोले ये शरीर तो मेरा है, ये मेरी अमानत है, ये मेरी सेवा के लिए, तुम्हारा क्या अधिकार है कि उसको तुम इतना उसको है ना लापरवाही करो उसके साथ में, और लापरवाही से पेश आओ अपने शरीर के साथ में, और उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखो। ये तो मैं बिल्कुल भी इसको सहन नहीं करूंगा आपको, आपकी ये जो हरकत है कि आप अपने शरीर के प्रति लापरवाह रहो। नहीं, आपका अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल लापरवाह नहीं रहना, स्वास्थ्य स्वस्थ रखना शरीर को, क्योंकि ये मेरी सेवा के लिए, मेरे मेरे उपयोग के लिए रखा गया है। हरे कृष्ण। This is very, very important actually. And that is why now I'm only busy with that only. Just spending time with devotees, going to their homes with other people, bringing love into their homes, bringing faith to them, getting them treated medically, getting their medicines donated, giving them health tips. All these things this is actually the bhakti preaching right now. It is a phase of preaching right now in our bhakti movement. Very, very important. We may not be these bodies, but the soul is in that body. Therefore, that body has to be protected. That body has to be taken care of. That body has to be fed. This is very important. तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम लोग, जैसे मैं खुद अभी कर रहा हूँ, मैं अभी खुद ये सब नए नए भक्तों के प्रचार के चक्कर छोड़ के, मैंने अभी जो जितने भी पुराने भक्त हैं वो उनका स्वास्थ्य का अच्छा नहीं, किसी का घर में जाके मैं घर घर जा रहा हूँ, उनका मैं प्रयास कर रहा हूँ उनकी सेवा करने का, उनको हॉस्पिटल में लेके आना, उनका इलाज करवाना, ये करवाना उनका सबका। तो ये अभी मेरा तो, क्योंकि ठीक है हम शरीर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोलूँ ठीक है तुम शरीर नहीं, तो लेकिन अभी हमारी आत्मा तो वो शरीर के अंदर ही है ना, तो वो अगर हम उसको शरीर को कैसे छोड़ सकते हैं हम, अगर वो शरीर ही सही ढंग से नहीं काम करेगा तो आत्मा को कहाँ जोड़ पाएंगे भगवान से। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए अभी कि जो भक्त हैं उनका हम शारीरिक रूप से भी उनकी सेवा करें, शारीरिक रूप से उनको स्वस्थ रखें, शारीरिक रूप से उनका इलाज करवाएं और उनको महसूस कराएं कि हम बहुत अच्छे परिवार से जुड़े हुए हैं, प्यार दें उनको। And finally, I will quote this quotation from Giriraj Maharaj when he had come to Bombay many years ago. He had given a lecture. And he said there was a Christian preacher, and every year he used to change his center. Every year he had to go to a bigger center because he needed more place. तो गिरिराज महाराज का मैं अंत में यही बताऊंगा। अंततः में गिरिराज महाराज ने अपना एक प्रवचन में यहाँ जब आए थे तो उन्होंने बताया था कि एक क्रिश्चियन जब प्रचारक था वो है ना हमेशा हर टाइम अलग अलग सेंटर पे जाता था कि उसको और बड़ा जगह चाहिए, तो हर साल अलग अलग सेंटर वो बदलता रहता था सेंटर, हर वर्ष जब भी आता था तो वो प्रचार के लिए। So every year he was changing to a place double the size of the old place. He was growing. So then the press interviewed him. तो ये है ना, देखा जाए तो हर साल जब भी आता उसको बड़े से बड़ा जगह चाहिए था, उसको बड़ा डबल उसका हो रहा था जो संख्या, इसके लिए बड़ा जगह था। इसलिए बाद में फिर उससे पूछा गया कि आप क्यों कर प्रेस रिपोर्टर आ गए उसके पास। So he gave they asked him, what is the secret of your growth? There are so many churches that are lying, stagnant. No one is coming there. They are lying closed and all. But I see that, your institution is growing. What is the secret? तो प्रेस रिपोर्टर ने उससे पूछा, इतने बड़े चर्च हैं उसमें कोई आ नहीं रहा, लोग वहाँ भीड़ नहीं दिख रही, कुछ नहीं, और आपका जो खुद आपने जो सेंटर जो आपने प्रचार केंद्र जो है वो आपके प्रचार केंद्र में तो भीड़ पे भीड़ होते जा रही है और बड़ा प्रचार केंद्र खुलते ही जा रहे हैं। ये क्या आपका सफलता का रहस्य क्या है, इसका क्या रहस्य है कि चर्च में लोग नहीं जा रहे हैं और आपके उसमें प्रचार केंद्र में लोग आ रहे हैं। So he said, I have a very simple principle. That means I take care of my congregation and God takes care of my institution. Very simple. तो उन्होंने बोला मेरे पास एक सरल सा मेरा सिद्धांत है, वो सिद्धांत है कि मैं मेरे जितने भी जो मेरे पास जितने भी लोग सदस्य आते हैं मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं उनकी देखरेख करता हूँ, उनकी सहायता करता हूँ और उनका संभाल करता हूँ, तो और भगवान फिर मेरे जो संस्था है उसकी संभाल करते हैं वो। It's a very simple philosophy and it works out very well with me. You won't believe how many people we are helping and on so many things. And Krishna provides. Similarly, taking care of the existing devotees now is not Prabhupada's job. Get it out of your heads. It's not Prabhupada's job. It is our job. We are alive now. We have to take care of each other, help each other. And Prabhupada will take care of ISKCON. That is his job. Along with Krishna and Lord Chaitanya, they will take care of ISKCON. So, very simple.
हरी बोल, हरी बोल। तो प्रभु ने बहुत ही अच्छा इधर बताया, बहुत जबरदस्त चीज बताई कि अभी हम लोगों को भी ये जो है ना, जो भक्त है ऑलरेडी यहाँ पे, जो भक्त बन चुके हैं अभी, तो वो कहीं छोड़ के जा नहीं चले गए, या छोड़ के चले, उनको वापस आना, उनकी संभाल करना, जो ऑलरेडी है उनकी भी संभाल करना, ताकि वो टिके रहे इधर ही इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत में टिके रहें और खुश रहें वो, और उनको लगे कि हम अच्छे परिवार से जुड़े, ऐसा माहौल मिले उनको। ये हमारा उत्तरदायित्व, अभी ये प्रभुपाद का उत्तरदायित्व नहीं है, ये है ना, प्रभुपाद तो चले गए हैं अभी। प्रभुपाद का उत्तरदायित्व है वो इस्कॉन की केयर करना, इस्कॉन को संभालना, वो उनका उत्तरदायित्व है। लेकिन जो भक्त है, क्योंकि हम भी जीवित है, वो भक्त भी जीवित है, तो हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे को संभालना है, एक दूसरे को ऊपर उठाना है, तो एक दूसरे को मुसीबत में काम आना है, एक दूसरे के अगर कोई अस्वस्थ है, बीमार है, उसको जाके उसका इलाज कराना है, उसको ऊपर उठाना है, उसको किसी को अगर कोई सहायता, कोई मदद की जरूरत पड़ती है, कहीं कहीं कुछ उसको कहीं नौकरी की जरूरत पड़े, जो भी है, बहुत सारी सहायता आप दे सकते हैं। उनका ख्याल रखें, उनको कभी महसूस नहीं होने दें कि वो अलग है, ये उनको यह महसूस कराएं कि हमारे बहुत अच्छे परिवार से जुड़े हैं। That's why Bhaktivedanta Hospital was built for 3 reasons. Number 1 is for the disciples of Prabhupada. As they grow older, they will get treatment and they will, undergo therapies and operations. Then the second one was to take care of devotees and give them treatment at reasonable prices. You see, even though the prices are rising up. And the third thing actually is to preach Krishna consciousness through the hospital. But the two main ones were serving the Prabhupada disciples who come there as their bodies age. And Srila Jayapataka Maharaj, after Hinduja Hospital, he came to Bhaktivedanta Hospital. And he said that actually the beauty of this hospital is that the doctors remind you of Krishna. In any other hospital, the doctors never remind you of Krishna. They remind you that you are this dying body. तो ऐसा करके तो देखा जाए तो ये हम लोग भक्तिवेदांत हॉस्पिटल के इसलिए 3 उद्देश्य थे कि जो जितने भी प्रभुपाद के जो शिष्य, जो अभी, क्योंकि मालूम है कि सब लोग के सब वृद्धावस्था में उनको बीमार पड़ेंगे, उनका हमें सहायता करना, उनको देखरेख करना, उनका इलाज करना है। और सब बहुत सारे भक्त हैं, उनको जो बीमार होते हैं, उनको आते हैं अस्पताल में, उनका भी हमें सहायता करना है। तो ऐसे करके हम लोगों के जो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने खोला था। तो ऐसा नहीं कि उनको बताने का है कि हम जयप्रकाश महाराज का जैसा है कि भाई शरीर नहीं है, ऐसा तो हम लोगों को ठीक है, वो लोग उस स्तर पे पहुंच चुके हैं, लेकिन हम लोगों को तो बाकी लोगों को तो संभालना है, वो तो उस स्तर पे नहीं है सभी जयप्रकाश महाराज के लेवल पे कि हम लोग उसको ऐसा करें। Prabhuji, can we take one more question, or you have a session after this immediately? I think you are... No. I have time, Prabhu, till 12:30, no? Okay, yes. So one more question is there of Divya Vishwambar Prabhu. Then go ahead. Yes. Unmute yourself. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Dandavat Pranam. Today we had an excellent tweet from your Lotus Mouth, wonderful class, Prabhu. And also you had took a topic of a very sensitive, that is devotee care. Point of devotee care, we found that we are being, as an ISKCON, as you told also, we are lagging on it. And also apart from that, we found that there are even the senior most devotees having a mindset that, see, particularly during this COVID pandemic period, they are thinking that now programs are not happening. Why should we, those who are already giving, why should we give a Lakshmi to others? Why we should give the Lakshmi to the Yatra to serve the devotees? Even though in spite of that, as a Yatra or doing so much of seva to so many devotees, but as a senior devotees, they are thinking that we are, the Lakshmi is not being utilized properly, or what other thing is that even carrying the devotees is not important as of, or carrying out a temple is not important, as they are to be self-sufficient for themselves. This kind of mindsets, how we can able to rectify from there? What is the thing, even if the devotees of each and every devotees are not ready to serve or to help the Yatra, then the Yatra can help other devotees or the senior devotees or the temples, whatever the case. What advice you tell them, or what advice we have to take care of that to hold the Yatra in a proper position and go ahead in the future? It is going to be, Yatra is just not one individual, it is a Yatra for the team, group of people, and it should be go for the longer run. We have to think for the everything, the Lakshmi, which is we keep it for that future you help only. What we have to tell them, what we have to advise them, please, Prabhu. Just like Christianity now is become churchianity. See, Christ is no more the center, it's the church, okay?
And, they have this policy of trying to convert as many people so that, their income would increase. That's why they've targeted India, all these missionaries and all that thing. You understand? Because human beings can generate money for you. Okay. Now, what we need to understand is that we need adequate funds within each temple that would actually be able to contribute something towards the welfare of devotees when they are not able to collect or when they are not able to contribute or anything of that sort. Because as you know, the body goes through 6 changes, you see, like that. So we should not see a devotee who is aging and having difficulties as a milkless cow, a cow who does not give milk anymore. Because that's one thing, a devotee feels very, very great suffering as he grows older, as she grows older, that they feel a sense of being unwanted. This feeling of being unwanted is a very, very horrible feeling that can age you prematurely very, very fast. Please understand that. And actually, to tell you honestly, I've never had a job in my life. I've never worked anywhere. But with my wife's, all her operations, somehow I had money to pay for her operations and everything, in fact. In fact, when she passed away, there were friends from Singapore, from Hong Kong, from Malaysia, and from Indonesia, from Jakarta. They were sending in so much of money. They were all devotees of Satya Sai Baba. They were all followers of Radha Swami and Sadhu Vaswani. You see, I had practically a surplus of 4.5 lakhs in the bank. They had sent so much of money after paying all the hospital bills after my wife passed away. You see, you understand what I mean? So we need to actually, maybe we can take it up in a separate session, that we need to revamp a lot of things within our ISKCON society. Because you see, times have changed. COVID has created such an order of things that were on the bottom have gone on top. Things that are on top have come to the bottom. So the 2 biggest threats to survival today is health and finance. And ISKCON is not exempted from that. So if a devotee is suffering, you can't say Krishna will protect you and this and that and all that kind of thing. No, you have to really help him. So that's why I have a trust, which is Bal Samskar Kalakshetra Trust. And part of the trust activities is also to contribute towards, needy people, who are not able to get, something which will help them actually come out of some difficulty. Same thing at Bhaktivedanta Hospital. You see, like that. Because yes, the temples in those days, that was a different situation in those days. You see, before the temples, there were a lot of devotees staying in the temples, even if you go to America. Now there are no devotees staying in the temples. The grahasthas are running the temples. These Matajis will go, they'll cook the offerings for the deities, and they'll come back. And only on Saturdays and Sundays, they have a program in the temples where people get together. So things have changed. Most of ISKCON is now staying outside the temples, you see. So I would suggest that, we can have a quorum or a forum where we discuss that, certain amount of funds could be set aside for the welfare of devotees. Because after a devotee has given his life for the propagation of Krishna consciousness, and then he goes into, some kind of bodily, difficulties, then I've seen that blood is thicker than water. When we joined, we were told that, your family is Maya. But I never thought that way. And when my wife had cancer, she was in the last 3 months, in St. Martha's Hospital. We shifted her from Bombay Hospital, Mumbai, to Bangalore, St. Martha's, because my cousin, my step cousin, she was the nursing superintendent. So my mother would, send food every day for myself and my mother-in-law. You see, like that. So blood is thicker than water. So I don't believe in condemning anyone. You may think your family members are attached, they are in Maya, they are this, they are that, even if they drink tea, coffee, and eat onion and garlic. We should not have anything against anyone. We should see them all as spirit soul. You understand? That is very, very important. Because we never know when we'll need these people. This big bhav, so many times the devotees get caught up in, as you on Sika, as we are on Kelak, is he chanting out? That is okay. But that is not the basis on which, we judge people.
and discriminate against them, right? This is very, very important actually. We have to be very, very careful about this. And I've seen that even till today, my brothers, they send me donations. My sister, she's always in touch with me on the WhatsApp and all that kind of thing and all that stuff. You understand what I mean? So now ISKCON has to broaden its perspectives and horizons, because our big projects are going to find it very difficult to sustain and maintain themselves. You see, you can already see that. You can see that. So we have to now, I would say, first and foremost, come back to the basics and take care of our devotees. Make our devotees feel wanted. See to their health. Even Srila Jayapataka Maharaj, he was very, very keen actually in having these, in taking care of devotees and all that thing. And I'm more than certain that once we start doing that, then actually Srimati Radharani will start providing. But we have to start again from the grassroots levels. Because the way life was when Prabhupada started the movement, everyone was living outside. They were all hippies. They were homeless. They left their homes and all. So when Prabhupada started centers, he made it for them. You come and stay here. Even Yadurani, you come and stay here, come and stay here. But now the situation has changed. Everyone has their accommodation. Everyone has their houses and all that. So I would say, take care of the congregational devotees. They are very, very important. And the Brahmachari ashram is gradually getting extinct in America. You will not find any more Brahmachari ashram. Because you see, we have not had an infrastructure for them abroad. Only in India, yes, with Radha Gopinath Mandir, Radha Ras Bihari, and then at Tirumala. Kargar temple. Yeah, Kargar is also getting devotees from Pune and all that. Kargar cannot survive on its own. They are not able to do that. The Pune devotees are going there and preaching and all that kind of thing, you see. So if you want to get something out of people, before that, take care of them, make them feel happy, and give them a guarantee that even if you lose your leg or you get cancer, we'll see to it that you'll have the best life after that. You'll not feel anything. Are we ready to take that challenge? If we do that, I promise you that within a few years, ISKCON will never have fund problems. Never have fun. Hare Krishna, Prabhu. Sarana Yes. Prabhu, go ahead. Hare Krishna, Prabhu. Actually, the devotee was asking that when the congregation is led by yatra, the subdivisions of the yatra should completely support the head. Yes. And if senior come back and tell why the fund needs to be collected, and that becomes a kind of disparity. The question here is, when yatra's most important asset of having kind of a place is going lost, or it is going to be slowly now we are not going to fund it further. The core team should be united enough to support. If there is we find that we are unable to push through this system to support the head. So in such situations, how to handle someone, if somebody comes in, why we should give fund, and how to take that senior devotees mindsets to not to come forward and move as one team to keep it together. We have to start building up a corpus now. We have to start building up a corpus. The temples cannot be right now overburdened by the medical needs and other things. Not the temple, Prabhu. Here in Middle East we have yatras. We don't have. We have. You're talking about yatras. Okay, I'm sorry. So yes. yatra, the group heads will have their own. Like for example, how Hemanga Prabhu told that group will have its own one small agenda. This thing. So they already collect some funds, and that remain with them. And then again, some more funds are required for the yatra. There is barrier there. We cannot go down the line. He cannot go because he's entrusted with the service of collection fund. And when he goes down the line, they already would require some seniors' permission to move forward, because they might already given something over there. Yeah. So this kind of things we should have a kind of approach from top bottom.
Bottom would top say- is finding difficult. I would say like this. Don't every individual devotee should actually see himself not just as a preacher but also a collector. If every individual devotee in the congregation gives himself a quota of collecting so much, and then along with the leaders, they sit together and say what would be an allocation, what amount would be allocated for this, that. I think that would be okay. You see, otherwise what happens when people become too dependent on the main organization? The main organization, a time would come when it would not be able to support. Just like you kids, all these big corporates and all that thing. They have laid off stock like anything. And, like in China also, they've just, burnt down factories and all and claimed the insurance because, they had grown so much like that, you see. Because we are going through times now where we have to probably scale down and intensify and consolidate. Scale down, consolidate, intensify. That would be like that, you see. We go through these different phases, you see, like even in history, you see, there were times when the deities, just like this Leelas of Radha Govinda Dev and all, they were hidden, in some kund, the deities, because they were all Muslim soldiers on guard and all that thing, you see, like that. There were so many other deities where these great devotees buried themselves with the deities and they died, just, under the earth, just to protect the deities. You see, these stages, could come up now, the way the world is going. You understand? Because ultimately the devotees are the most precious. They are the ones who are giving their life. And they have come to this conclusion. After Bahunam Janmanam Ante Jnanavan Mam Prapadyante. You see, that's very important actually. You understand what I mean? So these are very important things for us now to work on. And I would say the Gulf is such an important yatra because they are practically sending the maximum funds for all the projects. Amazing, service that the devotees in the Gulf are doing with all the yatras. It's really wonderful. So there is some message that, Krishna is trying to give us right now. And I would say, like I said, just stabilize, consolidate, intensify. I would keep it at that way. And regarding funds, like I've said, we see miraculously, even sometimes, we may not have the adequate funds, still things do happen. Krishna just wants to see whether we have that faith, that kind of thing. You understand? So I always see myself as a devotee who is contributing not just to myself, but to also help others. Help others, You see, you'll always find that. You'll always find that, works out very nicely. You see? Thank you. Very... Hare Krishna. Thank you very much, Damodar Pandit Prabhuji. Thank you very much for your very wonderful class, number one. And very important points that you have covered today, on especially how the devotees should interact. On a personal note, to the devotees, I know Prabhuji from my earliest spiritual connection days, very early in the 80s. And we were part of the same spiritual family once upon a time. And he's been very kind to me always. I especially like to thank Prabhuji for in 2009 when Guru Maharaj was, as he was mentioning, the Leela in the hospital, in Bhaktivedanta hospital. I had gone on a 15 days leave that time to see Guru Maharaj. And I was literally going every day, but it was very difficult to get access to Guru Maharaj. So it was Prabhuji who helped me to every day get connected. I used to touch the lotus feet of Guru Maharaj. Just once or twice, I even put my fingers into Guru Maharaj's hand and he was slightly touching it. So I'm really obliged for this time. It was like very heartbreaking time for us with all the devotees crying to Guru Maharaj's mercy and survival. And Prabhuji took great care that I get darshan every day. So I still remember those days in 2009. And I really like to thank him very much. And our connection goes. And I also took that one sock of your Guru Maharaj to give to your mother as Maha. Remember? Yeah, I know. No, she still has it. Because that is the pleasure. You see, that is the Chaitanya Leela. When Kala Krishna Das was rejected by Lord Chaitanya, all the devotees, they decided, how will we engage him? Yeah. All the devotees, they never thought, see what we should be in ISKCON. We have to have that mentality. If someone, falls down or does something or that, we should not condemn them. We should see how can they be engaged. So then all the devotees said, we have to get Lord Chaitanya's permission to send him to West Bengal
to tell them all about the pastimes of Lord Chaitanya's travels. So what they went to Lord Chaitanya? Lord Chaitanya said, you do what you want with him, but I don't want him with me. So what they went to Lord Chaitanya and said that, my Lord, actually, the devotees in West Bengal are suffering without any news about you. We need to send someone. So whom should we send? So Lord Chaitanya said, whomever you want, you send. So immediately they got permission. So that they immediately sent Kalakrishna Das. You see, so ISKCON should be a society that's structured, that even those who appear to be the most useless, we should use our minds to engage them fully and perfectly and make them feel wanted and loved and empowered. You empower people by love, not by knowledge, but by love. You see, devotional love. Over the years, many times, many devotees had wanted operations, they wanted medical treatment. So I have been very much after Prabhuji to help, and he's always been very kind to connect them to the temples and get them treated. You would make sure they would get prasadam, the DT darshan, and counseling. But some of them were so taken back. But it was like a shock for some of the devotees losing their fathers, mothers suddenly. So Prabhuji used to counsel them. It was so nice over the years. I mean, I've not brought him for classes for many years because he was very busy, but today I got the opportunity to have him today. He also does a lot of seva in the rural areas of Vada with orphanages. Prabhuji takes orphanage children to various dham, for which we in Shambhaji have been trying to give some support to Prabhuji many times, but I request all the others also to come forward more and more to help Prabhuji. He's doing such wonderful seva there. So today the class was very enlivening for many, and I'm sure you all will follow some of the points that Prabhuji has mentioned to take care of devotees. It's very important, and to make sure that each one is feeling cared instead of only being philosophical. So it's important. So thanking Prabhuji for this wonderful. I leave the last part to Prabhuji to say a few words before we end. Prabhuji, yes. Yeah. Go ahead, Prabhuji. You want me to say a few last words? Yeah, we end the class. Okay, my last words are that actually Prabhupada had a vision for the Gulf also. Just like, his vision for Russia materialized, but he did not have time because there was not much preaching going on in the Gulf at that time. So you all are actually fulfilling the vision of Srila Prabhupada for the Gulf. It's very, very clear. And according to me, before I conclude, I'll just tell you a story about this Muslim lady. What was her name? Rubina Khan. I'll tell you the story and then it will make your hair stand on end. She was brought to Bhaktivedanta Hospital with 94% burns. Her husband was a mechanic in the Gulf, and she must have had some disagreement with her family members at Nayanagar, that is Mira Road. So she had thrown on kerosene on herself and set herself on fire. So when she was brought there, she was in such a bad shape that she actually said that they said that abhi kya kare, and she was only calling out for water. So then I told this spiritual care nurse, her name is Vishrita. Now she's initiated. Her name is Achyuta Priya Sakhi. I told her that let us give these people from a different tradition the love of Lord Chaitanya, just like he would have given the Muslims love when they were in distress 500 years ago. So their relatives were there in the room, and she was really, suffering, that. So we went to them and said that, see, we have this spiritual care department where we try to make our patients feel nice in touch with God, even in their own tradition. And we also offer our tradition in that service. So I said, you read from the Quran on one side, and we will read from the Bhagavad Gita from the other side. So they were very happy. They said, okay, do it. So they started reading, but within half an hour, because they had no stamina, they stopped reading. Then they were looking at magazines and, talking with each other. So we said, can we continue reading? They said, no, aap kar sakte, aap kar sakte. So this spiritual care nurse, amazing girl, this Vishrita, now she's, married and she's initiated by Radha Maharaj.
She read actually the whole Gita twice for this Rubina Khan, all through the night and through the day. So the next day after that, the day after that, you know, when I was in my office, the relatives of Rubina Khan came and said, "Your sister कहाँ है?" तो मैंने बोला क्या कौन सी सिस्टर? वो सिस्टर जो एक्चुअली वो पाठ कर रही थी ना, तो मैंने बोला कुछ अपराध हुआ? नहीं 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 नहीं, उसको बुलाओ ना, उसको बोलो पाठ करने के लिए ना, हमको बहुत अच्छा लगता है. So they called her. So I called Vishwita. That was in the night. She, you know, and she was reading. You see. So what I mean to say is that when you anyone who's in distress and you preach the mission of Lord Chaitanya, it transcends the bodily platform of mundane religion. Of being Muslim or Hindu or Christian or Sikh or whatever it is, it transcends, right? It went on like that. Then finally, Rubina recovered a little, but again, you know, because of sepsis and all, you know, her whole body got infected. And that day when she was going to leave her body, this spiritual care nurse Vishwita, that is her name, Achyuta Priya Sati, was reading Bhagavad Gita for her, and then she had gone to take rest. I had gone for one of our doctor's weddings, and I came back at 11 o'clock, 11:30 in the night. Some child had lost the arm in an elevator accident, so I was busy there. That was a Muslim child. Then I went to the third floor, and the relatives came running to me. They said, Maharaj, Maharaj, wo sister kahan hai, sister kahan hai? I said, kya ho gaya? He said, Rubina mar rahi hai. Wo sister ko bulao na, sister ko bulao. So I went and called her. I phoned her up. I said, come down, they are calling you. Imagine these Muslim relatives. So then Vishrita came that time. And then they said, sister, aapko jo kuch karna hai, aap karo. So they all went out of the room. Vishrita, sister, put, you know, Ganga Jal in her mouth. Vishrita put Tulsi on her forehead. She began to read Bhagavad Gita till Rubina left her body. They never said anything. You see, they never said anything. You see, that is the power of Lord Chaitanya's movement. That is the power of Srila Prabhupada, who is the greatest Acharya in Kali Yuga. You understand? And later on, when we met these Rubina's relatives, they say, "Hamesha aap logon ka yaad rakhte hain, jab bhi hum Bhakti Vedanta se jate hain." So try to understand, this is a mission of compassion. This is a mission of love. This is a mission of sacrifice. This is a mission of a heart-to-heart relationship with each other. And Lord Chaitanya has a mission for the Gulf. Believe it or not, people will come at some time or the other to want to know what is Gita, the Bhagavatam and religion. It's just a matter of time. Have the faith, have the determination, be united, and be grateful most of all. No one has this wealth that we have. So treasure it and don't lose it. And treasure the devotees, protect the devotees, love the devotees, care for them, and cherish them. Thank you very much. Thank you, Damodar Pandit Prabhuji. Thank you so much for the nectar, and really obliged. And as always, a great pleasure to interact with you. Please keep in touch and pray for all of us here. And I will also convey my regards to Kapila Prabhuji and tell him that you were there. So he will also be happy that you had joined us. Yes. Oh, yeah. Yes, yes. The whole time was always so merciful and Jew. So thank you again. And Vancha Kalpadru Vascha, Kripa Sindhu Bevacha, Pati Chatanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Thank you. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu. Thank you very much. Thank you, Prabhu. Thank you very much. Wonderful service. We have some announcements. I would like to have some special praise for His Grace Dayaram Prabhuji, who is admitted right now in the hospital. आपका phone number बताइए. Suffering from post-COVID issues in Brazil. हेमंग चेतन दास बात करें. आपका phone number मुझे चाहिए. मैं बॉम्बे में हूँ. आप बॉम्बे में है ना? Hemango Prabhuji, just unmute yourself and mute yourself. Or His Holiness Nityananda Maharaj, Swami Maharaj, he is admitted in Bangalore also for treatment, and he is hospitalized. So let us pray for all these three wonderful souls who are senior devotees in the ISKCON movement.
3 times. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, I request your prayers for His Holiness Jayaprada Krishna Maharaj or Gurudev, who is recuperating in Chennai. And I am told, I had some news yesterday that he's much better, but still under observation for some smaller issues. So let us pray for him also. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, your prayers are requested for Janki Mataji, good mother of Radhakishore Prabhu, who is admitted to the hospital undergoing treatment. Also, please include mother of Arjun Jivan Prabhuji also in your prayers. Though she is not sick, but still we like to pray for her. So let's pray for them also. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I'd like to also pray for Radish Prabhu, who's having some COVID issues, and also for all the other devotees and non-devotees who are suffering from COVID. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I have not got any more prayer requests. If anybody still has, you can quickly put in the chat box or raise your hands. Hare Krishna, I would like to thank Radhabhav Prabhu for arranging such a wonderful program, giving us an opportunity to enlighten us, keep us connected with Srila Prabhupada and all the Acharyas. I just want to take this opportunity to thank you. Hare Krishna. Brother Prabhuji, thank you for your mercy. Always nice and blissful to see you. Hare Hare Bol. Gaura, Gaura. You are wearing a wonderful white. Hare Bol, Prabhuji, Hare Bol, Hare Krishna. Okay, Prabhu, I am leaving now. I had to go temple. I had got some service. I had to go temple. Please. Emango Prabhu Jai Ho. Emango Prabhuji, wait. You cannot rush like that. Wait. Hello. ऐसा जल्दी जाएगा तो अगले हफ्ता आपको ट्रांसलेशन का सेवा नहीं मिलेगा. हेमंग प्रभु, आज आपने सुबह का आपका प्रश्न का उत्तर मिल लिया ना. आपको यहाँ रहना है, बहुत लोगों को भक्त बनाना है. आप जहाँ है वहाँ गोलोक है, तो आपको स्पेशल कहीं जाने की जरूरत नहीं है. प्रभु, आप काली क्लास सुना, अभी हमको ब्लेसिंग्स भी देना है. हरे बोल, हरे कृष्ण. आप लोग हेमंग प्रभु जी, आपका जो मॉर्निंग में जो कॉल आते हैं ना, वो लोग को बोलने का, ये जब क्लास करने में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा मेरे को, ऐसा करके उसको अरे वाह, क्या करेंगे अभी. सब लोग बोलते हैं इम्पोर्टेंट कॉल है, इम्पोर्टेंट है. 1 मिनट से आधा मिनट सुनो. उनको बोलो फ्राइडे मॉर्निंग शामदेश के लिए कुछ गुंजाइश नहीं. अभी संडे मॉर्निंग प्रभु, अभी संडे मॉर्निंग है. संडे मॉर्निंग, अभी फ्राइडे संडे मॉर्निंग. यस. क्योंकि संडे को यहाँ पे भी हमारा सब होता है ना, छुट्टी होता है. यहाँ पे भी छुट्टी होता है ना सबका, इसके लिए. सही. ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी. आप ओके प्रभु, सब प्लीज एक्शन में हम बोलो बेसिस to Radha Prabhu, Govinda Prabhu, all the Vaishnavas, and then please bless me that I can serve all of you and Gurudev and all the Vaishnavas nicely. Hare Krishna. Okay, so I am leaving Prabhu with your permission. Hare Krishna. Thank you Prabhu. Thank you. Hare Krishna. अर्जुन जीवन प्रभु का हाफ अटेंडेंस है. आज के नहीं है तो फुल अटेंडेंस नहीं है. Actually, when Guru Maharaj was in the hospital, Prabhuji was serving him like anybody's business. You know, he used to be there continuously, 12 hours, 14 hours, continuous. I remember Damodar Pandit. कृष्ण कृपा रहना प्रभु की जय हो. ओके. अर्जुन जोस प्रभु की जय हो.
धन्यवाद प्रणाम प्रभु। आपके मम्मी डैडी और आपके सब लोग ठीक ठाक ब्रो, हरे कृष्ण, ऑल फाइन ब्रो, थैंक यू ब्रो। थैंक्स मदर, माता जी सफेदी बहुत अच्छी बनाई है, थैंक यू सो मच। हरी हरी। बीजी कैसी है बीजी? ठीक है प्रभु जी, ठीक है, प्रणाम प्रणाम देना मेरा। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स। आज क्लास बहुत अच्छा था, टॉपिक बहुत अच्छा था। नहीं प्रभु जी मेरा पुराना दोस्त है, मेरा ऐसा गॉड ब्रदर भी था एक जमाने में। और प्रभु जी क्या है, हमारा गुरु महाराज को बहुत सेवा किया उन्होंने। जब हॉस्पिटल में थे ना, वो जनवरी मंथ उधर फर्स्ट 2 मंथ्स था ना उन्होंने, लास्ट हिंदू के बाद में, तो 12 घंटा 14 घंटा गुरु महाराज के पीछे थे। इतना सेवा किया उन्होंने, पूछो मत। बहुत हमारा रहते थे वो बाजू वाले रूम में गुरु महाराज, इतने मतलब हमारे गुरु महाराज से बहुत अट्रैक्टेड भी हो। और तभी मुझे उन्होंने काफी मतलब 15 दिन जब मैं थे वो टाइम में, तो डेली मुझे दर्शन कराते थे। और कभी मुझे एक स्पेशल पास दिया था, तो मैं कभी भी जा सकता हूँ। इसमें था ना, स्पेशल रूम में था, जाने के अलाउड नहीं था। तो महावारे को मैं फिर थोड़ा बाहर निकालते थे, थोड़ा बोलते आप आराम करो, मैं जाके फिर बैठ जाते थे। तो हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, क्लोज है। मेरे घर पे भी आते आते, और मेरे माँ का भी एकदम अच्छा मतलब ये है। और लेकिन बहुत बिजी रहते हैं वो, तो मैं बहुत दिन से उनका पीछे था कि क्लास ले करके, और वो ज्यादा क्लास भी लेना चाहता नहीं, लेकिन मैं आज उनको जबरदस्ती बिठा दिया था। बोले कि कैसे भी करो करके। उन्होंने जो पॉइंट बताए प्रैक्टिकली, और बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं जिससे हम मतलब मोटिवेट हो सकते हैं। सब भक्तों का वहां पर जो भी उनका काम ही है, उधर वो फुल डे वो 5 फ्लोर में घूमते रहते हैं, सभी को दर्शन कराते, ये करते। उनका मतलब वो ऐसे ही एकदम लीला में है वो। थैंक्स Anybody else is there now in Sarana Prabhu? Spotlight yourself. You are taking, you are highlighting Prabhu, Divya Prabhu. Okay bro, you made me co-host. Okay, I'll miss it. Ama Pandit. Who else is there? Pandit. Vrindavan Gopal Prabhu. जय श्री राम। क्या हो गया आज? कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। आपने आज एक भी प्रश्न नहीं पूछा। आज आपने एक भी प्रश्न नहीं पूछा। जी प्रभु जी, आपने आज एक भी प्रश्न नहीं पूछा। प्रश्न पूछने का वो है ही नहीं। आज बहुत दुख का विषय बन गया है आज ना। क्या हुआ? अभी एक शोक, हाँ एक दुख हुआ है अभी भारतवर्ष में। लता मंगेशकर नहीं रही। हाँ वो तो ठीक है, सुना था मैंने। उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं एक बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम समाचार हरे। May Lord Krishna keep her engaged in his service. कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे। ओके, अतुल तिवारी प्रभु, हरी हरी। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। कैसे हो? ठीक है, ठीक है प्रभु जी, सब बच्चे लोग ठीक। हरी हरी। हरे कृष्ण। सुरपति प्रभु हरे बोल। और यू Surapati Prabhu, you're not there, or you're there? Can't see him, Prabhu. Sadhanam Prabhu is here now. Sadhanam Prabhu Jai Ho. Sada Harinam Prabhu, where are you? You are hiding. You have to go little up. No, he's in the screen, bro. He's in the screen now. No, it had gone down. He was like, trying to hide himself down. We brought him up. Where is Meghna? Meghna is in that music class, Prabhu. Okay. We are our love and thank you. And who else is there? Dinu Prabhu. Dinu Damodar Prabhu ko Jai Ho. Hare Hare Bol. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. What is your name, beta? Priti Prabhuji. Preeti. Hare Hare Bol. How is your mother's health? Hare Krishna Prabhuji. Pranam. Hare Krishna. Bhagavan
ഭഗവാന്റെ കൃപയിൽ എല്ലാ വൈഷ്ണവരുടെ പേഴ്സിലും ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പ്രഭു. 3 Very months good. ചെക്കപ്പിന് പോകുന്നുണ്ട് പ്രഭു. ശരി ശരി. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പം ഇല്ല പ്രഭു, ഇപ്പൊ മെഡിസിൻസ് ഒന്നുമില്ല. Okay, 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 okay. Really nice. But take some Ayurvedic medicines for immunity. That was take some. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhu, your the light focus is little away. I think Surapati Prabhu, you are. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Now you can see you a little bit here. Yes. Yeah. The light was. The camera is facing the light, so you are dark. Everything okay? Yes, everything okay, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Are the devotees coming to the villa today? Are you in touch? Anybody is coming? Prabhu, I need some devotee to count the vessels, Prabhu. Myself will come, Prabhu. I will try to come, Prabhu. Okay, Prabhu. And Sadayana Prabhu will come. Yes, Arjun Prabhu also said he may like to join. Okay, Prabhu. Just check with him. No, yesterday he was waiting for your call. Okay, bro. Okay, great. Hare Krishna, bro. Aarti, how are you? Hare Krishna Prabhu. How are you, Aarti? Good Prabhu. Where is your brother? How are things? Everything Office, okay? Prabhu. He's in office. Great, is working. Achha, okay. Very nice. I hope you are doing. Yeah, Prabhu. Good. Daddy is fine. Where is Daddy? Yeah, he is fine. He's also in office. Really? Mother is here. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna, Hare Mataji. Krishna. Take care. Vidyabihari Prabhu. Nimai. Kemano balo Vidyabihari Prabhu. आपका आशीर्वाद प्रभु जी, आपका कृपा। निमाई किधर है? निमाई दास किधर है? नीचे तरह खेलने के लिए गया प्रभु जी। कृपा सिंधु को क्या हो गया? तो थोड़ा सा चोट लग गया प्रभु जी। किसको लगा? तो हमारा हाथ में प्रभु जी। ओके। कैसा हो गया? कटिंग हो गया या लग गया? नहीं, वो हम में प्रभु जी एक्चुअली लाइट नहीं था, सो थोड़ा पिछल गया था प्रभु जी, बट बच गया। आशीर्वाद करना प्रभु जी। पिछल गया या माता जी ने मारा? बंगाली सच बोलो प्रभु, बिल्कुल सही बोला प्रभु। माता जी का जख्म दिया हुआ है। जल्दीबाजी क्या नहीं प्रभु, सुबह जाना पड़ता है ना 4 बजे, तो उसी टाइम थोड़ा जल्दीबाजी क्या, लाइट किस हो गया था, रियल एस्टेट थोड़ा कंजूस था, फिर अभी सही कर दिया प्रभु जी। प्रभु हम सब समझ गए। अर्जुन जीवन प्रभु एक्चुअली विद्या बिहारी को माता नहीं मार सकते, क्योंकि उनका नाम ही कृपा है एकदम, तो ना कृपा माई, ये तो मारेगा नहीं, ये खुद गिरा है, कुछ लफड़ा किया है। वही है प्रभु, माता जी के पैर में गिरा है। आशीर्वाद चाहिए प्रभु जी। हमेशा मरने से पहले तक तो वैष्णव का गुरु का कृष्ण का चरण में सिर्फ सेवा करके बस बिताना है प्रभु जी, दूसरा कुछ तो कोई नहीं। अर्जुन प्रभु, और एक बात है कि विद्या बिहारी प्रभु को एक आदत है, वो कुछ भी चीज है ना बाहर के वो सर पे लेता है या पैर पे लेता है। 2007 में उसका सर पे लिया था और 3 महीना हॉस्पिटल में था। फिर भी प्रभु जी भगवान का, गुरु का और आप लोगों का आशीर्वाद से हमारा थर्ड लाइफ है प्रभु जी। हमको बचने का, हम तो गया था, दूसरा जन्म में आप लोग विदा लेता है, बट हमको तीसरा लाइफ मिला हुआ वैष्णव लोग, आप लोगों की कृपा से हम अभी तक आप लोगों के सामने है। कोई ये नहीं था प्रभु जी बचने का। प्रणाम प्रभु जी। चाहिए मुक्तिपाद प्रभु, मुक्तिपाद, हाउ आर यू? Hare Krishna Prabhuji, Dandat Pranam. I'm fine Prabhuji. How are you Prabhuji? Good. Are you free today? Prabhuji, I came in Omal Queen Prabhuji. Okay. Because there is some seva in villa, so to count some utensils and all. If there is any devotees available, you can send them. It will be nice. So I will ask Prabhuji in KHK. Yeah, but somebody has to drop them there, no? Then. Yes, Prabhuji. You can please interact with Sadarana Prabhu. He will coordinate. Okay, Prabhuji. Okay. Just.
ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अर्जुन जी प्रभु जरा देख लेना आप एक बार बात करके इनसे। ठीक है प्रभु। थैंक यू सर। ना प्रभु प्लीज कोऑर्डिनेट। Yes, Prabhu, I'll do. Yeah. Okay, I think we covered everybody, right? Nobody is pending. So we covered everybody. We can wind up. No, Yes. 1 minute. Divya Prabhu not covered. Okay. Okay. Hare Krishna, Dhanot Pranam to all the Vaishnavas. So please, Ratnangi also want to join. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Ammi achchinu ke sundhanelle. Achinundu backilundu. Hare Krishna. Namaskaram. Namaskaram. Okay, please. ഇന്നലെ കവർ ചെയ്തോ ദുബായ്? ഇല്ല നമ്മൾ ഇന്നലെ പുജേറ സൈഡാ പോയത്. Okay. You went upwards. Yeah. So actually that was I'm busy with them taking out always. That is the reason we couldn't able to contact. Come on the Abhishekam day to my place if you can come over. Okay, bro. Because if it is for the weekdays is the problem for me. For them, they are ready. For me is the problem. Coming on a weekdays is the issue. I'll try my best, bro. This time I'll try. You'll not get a chance. Come late also, no problem. Sure, Devadashi, I'll try to come, bro. Sure. Okay, nice. Thank you, bro. Thank you very much, bro. Sadarana Prabhu also will come if you come. Sure. Really? Okay. Vrindavan Gopal Prabhu. नहीं है, okay, ठीक है, जो करेंगे। Fine, Prabhu, we'll end here with a long session. Okay, thank you very much. Hare Krishna. Indian Das Prabhu की जय हो। Pavani Vishnu Namo. हरे कृष्णा। Divya Prabhu, Arjun Prabhu, when will go? I will give you a ring, bro. I'll just talk to my guys also. I'll let you know, bro. Sure. Okay, Prabhu. Okay, Hare Krishna. Thank you. Take some videos of that. Take some videos. Okay, Prabhu. Yeah, it will be good. Very good. Okay. I'll end, Prabhu. Yes, please.